Okay, so good morning to Mr. and hello to Irfa. What trade holding? That is the same trade as yesterday, like BTC. Okay, nothing else. I just holding the BTC trade, which I took. And if you haven't joined our Telegram, do join. So this is the link. Okay, first of all, we will do the analysis. So, are you ready, guys? Are you ready? So let's do some analysis in regarding BTC and I mean not BTC gold. We will do gold analysis right now. Okay, so let's go. Okay, I hope you can hear my voice. Everything is clear. Hmm, are you in gold? I haven't taken right now, but I will just do the analysis for you guys. Okay, so this is the gold. I hope you guys remember this trade which I have given you yesterday, which I have given you yesterday. This one. I told you this is the order block before closing stream. I told you this is the order block. Try to take a trade. Keep your ACL above the order block of like 10 pips to 15 pips so that you might get a profit. And actually, I took the trade from this area, from this zone. Okay, 3392. I took this trade and I came out from this area. Okay, 77. I came out. Nearly, I got 150 pips something. 150 or 170 pips I got, or 130 pips something. I hold it. Then मैंने उसको बुक करके बाहर आ गया। उसके बाद मैंने अभी तक लिया नहीं ट्रेड। एक मैं जोन मार्किंग करके रखा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से मैं बाय जाऊँ। ओके, सो आई जस्ट मार्क अ जोन। द जोन इज हियर। आप देखोगे तो 5 मिनट पे यहाँ पर एक लो बन रही है एंड यहाँ पर एक पुल बैक भी बन रही है 5 मिनट पे। सो बट वी विल ट्राई टू डू एनालिसिस रिगार्डिंग लॉन्ग टाइम फ्रेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू दी वन डे। ओके, वन डे पर चले जाते हैं। वन डे व्हाट यू कैन सी मार्केट इज बियरिश टुडे। ओके, you can see today one day market is bearish today, right? You can see that this is the one day resistance type and it break that, market gone up, it did a pullback. Okay, so again it gone up, now it's trying to go downside. Okay, so one day market seems like it can come up to 60. Okay, so in one day time frame market has the capability to come to 60 due to the pullback area. Okay, so pullback is there and a fair value gap is there. So market has the capability to come to 60 in a one day time frame, not more than that. So we will go to the 4 hours time frame। 4 आवर्स पे देखें तो भाई सेम जैसे मैंने बताया था, मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये जो वन डे का रेजिस्टेंस जो था वहां तक ही मैक्सिमम आ सकता है मार्केट। सो 150 पिप्स ही मैक्सिमम गिरने का चांसेस है। ओके, so we have a chances like 150 pips market can fall in a one day time frame and 4 hours time frame, but we are not taking we are not waiting for that long. We want a trade for now. So what I can do now, I am just gonna go to the 1 hour time frame again to check the zone। 1 आवर पे तुम देखोगे तो भाई यहाँ पर सेम ही है। तो मार्केट का पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई सीम्स लाइक कि भाई मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड पे अभी भी है। ओके, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड पे है। सो वी हैव अ स्टिल लाइक लॉन्ग डे। ओके, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम लोग का क्या लग रहा है, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड है क्योंकि ये वाला जोन तक अभी भी पेंडिंग है, तो मार्केट आ सकता है यहाँ तक। ओके, एज अ पुल बैक। ठीक है, लेट्स गो टू दी 30 मिनट। ओके, 30 मिनट पर मैं देख सकता हूँ कि भाई या तो भाई पूरा बियरिश पे चल रहा है एंड हाई पॉसिबिलिटीज क्या है भाई, फिर भी देखा हो तो भाई यहाँ तक आने का चांसेस है जो है 60। ओके, 60 आने का तो अभी भी चांसेस है। सो वन डे 4 आवर्स 1 hour 30 मिनट एवरी डायरेक्शन वी कैन सी दैट मार्केट ट्रेंड इज बियरिश। ओके, मार्केट ट्रेंड इज बियरिश। So if anyone want to go for the buy, that means what we can do, we can make only 50 pips or 70 pips. Why? That will be the pullback. After that, market has high possibilities to go downside. Okay, so you know
long time frame, what I can see that market is bearish. Market try to do the pullback and it has a possible to break. Okay, I mean possible to go downside, just the way you can see this. Okay, तो ऐसे देख सकते हो मार्केट ने इस सपोर्ट की तरफ बनाया था ये वाला. You can see that, right? It made a support. It did the try to do a pullback. It has a possibilities of market to come to 58 to 60. So every time frame, what we can see that market has a bearish trend. Okay, and let's go to the small time frame again, so that is there any pullback we can enter in a trade. I can see that market did the pullback. So chances क्या है, bearish के chances ज़्यादा है यहाँ से. ओके, bearish का chances ज़्यादा है. तो यहाँ पर तो भाई हम लोग को कोई जोन नहीं मिल रहा है ट्रेड लेने का, बट मैक्सिमम कोई भी होल्ड करना चाहता है कि भाई इफ यूर इन अ बाय साइड. Okay, if you're in a buy side, let me see some zone again. So long time frame, we can see market has the downtrend. Okay, long time frame, we can see market has the downtrend. Let's go to the 5 minute time frame. You can see that market did the pullback. Now what can happen? It can go down now. Okay, so if it break these areas, then market has the capability to fall up to 60. Okay, so if anyone has the buy trade, I would say come out from the buy and you can go for the sell. 90 pips of pay sell, go for the sell and you will hit your target up to 60. So every time frame I can see some selling trend only, not a buy. Actually I just taken only one buy morning. Okay, not a morning, okay, like 1 hour before I took a trade. As you can see, market did the pullback and we got up to this. Okay, so I got like 30 to 40 pips. I got in a buy side. Then after, I came out in a cost to cost because I don't want to lose my capital. So maximum, if it fall, it need to fall up to this, and if it break this all area, then huge fall you're gonna get today also. Today also you're gonna get a huge fall. Okay, look at this. चले जाओ 60 हो गया. Okay, and let me see any Fibonacci retrace or what. If I get, we can go in a buy side, otherwise market will fall. Okay, it breaks, so no use of staying in a buy side. If anyone in a trade, try to come out and go for the sell. If it break this loan, okay, if it break this area, low area, then market will fall off to 63. So 60 pips market can fall if the rectangle breaks. I mean like this zone area which is 69 area. If 69 area breaks, market will fall to 63. Okay, 60 pips market has the possibilities to fall because there is nothing here to hold the market now. So if 69 breaks, market will go to the 63. So for our safe, if anyone in a buy, you can come out from the buy or hold up to 69 or 68. Then after you can come out. Okay. रिस्क बहुत है भाई, रिस्क हो जाएगा. Okay. So, okay, good morning to everyone. Actually, I just explained you regarding the gold trade. So, chances are there market to go downside maximum, like 70 to 80% of chances what market in a bearish trend. And yeah, sometimes you know that some liquidity area market do the pullback so that sellers can come out from the market. Then again, it goes to the same direction, and we can go for the trade until it make a change of character or a breakup structure in a buy side. So I can see only market is doing breakup structure, and it's going downside. So if it make a uptrend, we have to see for the change of character and this market shift.
You have to see this shift, then you can go for the trade. What will be the target? Target you can go, okay. Okay. So yeah, morning 7 a.m. in cold buy. Nothing but I can tell you. Okay. If you listen, then I hope you got it. Otherwise, just leave it. Okay. Today morning 3004. Okay, let's leave it. I just told you clearly. So even though if you don't understand, then rewind and see what I told. Okay. Usually we can't say many times. We are doing full long live stream. বাইরে বেরিয়েছি তুই ভুল করবি কেটে দিয়েছিস এটা ভুল বের করবো আমাদের close হয়ে যাচ্ছে ভাই এটা কি হচ্ছে ভাই ভাই এটা কি হচ্ছে भाई क्लियरली बता रहा हूँ भाई आई जस्ट टोल्ड यू क्लियरली क्या क्या करना है क्या क्या नहीं फिर भी तुम लोग को ट्रेड लेना है तो भाई तुम लोग नहीं लेना था भाई तुम छोड़ दो भाई ठीक है मैं टोल्ड यू भाई क्लियरली कि भाई मार्केट है यहाँ तक मार्केट ने पुल बैक दिया है जाना है तो भाई यहाँ से ऊपर जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तभी बाई पे जाना हो अदरवाइज गो फॉर द सेल so will buy after it hit the demand zone yeah I'll try to buy from that area okay 60 okay I got 50% and got in the sell side panic yeah so just the way I clearly told you what to do and what not to do so you can see that market has hit this 60 ভাই আমি বেরিয়ে যাচ্ছি but if I enter now I have to keep my SL like 100 pips so that is the reason I'm not entering now তুই একটাই নিয়েছিলিস না এখান থেকে লেনিং বড় হচ্ছে মারবি দে অলরেডি দূরে চলছে আমি মারতে হবে না ওকে ইয়া
Yeah, hi to everyone. So if I enter in a buy right now, that means I have to put my ACL 100 pips off. Okay. So that is the reason I just don't want to enter now. If I enter, I have to put my ACL 100 pips. So I don't want to do that now. So I want to enter like low area. Okay. And I just told every time frame. I just told you clearly in every time frame. Okay. What are the possible scenarios now? I don't want to take up right now because I will have to put my ASL too far. Yeah, that is the same thing. I'm just saying that. Actually, we can't like enter directly, but if you enter, you have to divide your lot size and then you can go for the buy side. So reason you have to put your ACL like below the low area which is here. Okay, so like 50 and your ACL gonna be like 100 pips and above. So so that is the reason I just told you clearly. Okay. Okay. So how much it keeps it gone? As from the here also, if you have taken, I just told you by 1600 breaks, market will come up to the this area. And if you see from 692, it came to the 58, like nearly 100 pips it gone. Okay. And right now, I'm just not gonna enter now because if I enter now, I have to keep my big SL. And that is the reason I haven't entered. ओके बाइक जोन है ना अभी गोल्ड का क्या रिट्रेस पर ट्रेड लेना है देखो रिट्रेस पे तुम ट्रेड ले सकते हो बट क्या होगा कि भाई अभी ईसीएल बड़ा हो जाएगा इसीलिए तो भाई मैं नहीं बोल रहा ईसीएल बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई अभी एंटर करने के लिए ओके दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ईसीएल बड़ा हो जाएगा तो आई एम नॉट एंटरिंग नाउ मार्केट पूरा भी गिनता देख ओके सर बोलिए एनी ट्रेड थैंक्स फॉर द स्टॉरी बहुत अच्छा এক মিনিটের মতো মুভমেন্ট দিচ্ছে so much of fluctuation I देखो if you want to go for the buy this is the possibilities that market can go from this area right? You have a chance to go for the buy but the thing is you have to put your ACL regarding your equity so if it break and form a candle below 48 that means it's gonna be a huge fall downside again it will fall up to 3332 okay so from this area market need to go upside because it grab already this low liquidity this one so it has a capability I mean from my side if you ask me my point of view is right now buy side and if it break this low and start a candle okay if it start a candle below this like 50 okay below this candle like 50 below then market has the sell side area otherwise from here market need to go upside I just told you market did the pullback in a 1 day 4 hours 30 minutes every time frame I told you clearly that market is in a sale
and you can see the sell fall which is up to here. Okay, and right now this has grabbed the liquidity from this low area. Now market need to go upside, but you have to keep your resistance just the way I told you. You have to keep your resistance 50 below, and if candle close below 50, then market will go below like this low area. So we don't want to hold up to that much. What we can do, we can come out in a 50. So if anyone want to enter, just try to keep your SLTP and in a low lot size, you can enter in a trade. Okay, 3391 থেকে শর্ট হোল্ডে আছে, টার্গেট 3299। উতলা পরে টার্গেট রাখোগে अब। I would say কি ভাই দেখো, এখন বুকটা করে নেওয়াটা খুবই উচিত, কেননা আমি সেল করেছিলাম, আমি বুক করে চলে এসেছি, অ্যান্ড এখন বাইরা হোল্ড করাটা ওকে ইটস নট গুড এরিয়া, কেননা মার্কেট অলরেডি লো লিকুইডিটিটা নিয়েছে। 50 নিচে ব্রেক করলে মার্কেট উইল গো ডাউন সাইড, আদারওয়াইজ ইট হ্যাজ আ পসিবিলিটিস টু হিট अगेन 70 70 तक जाएगा मार्केट। So 70 has the possibilities to go. So let's see, it will need to go to the minimum 70, and SL will be like minimum 50 from this area, like 1 is to 100 pips of buy, 100 pips of sell. We'll take that. 75 মিনিট বুক করেছি, আর বাকিটা ট্রেল করবো। ওকে ওকে, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। सेल होल्ड रखे नहीं ब्रदर, डोंट होल्ड सेल, ठीक है, ट्रेलिंग करो, क्योंकि यहाँ तक मेरा टारगेट था 60 तक। ओके 60 तक आई वाज इन अ सेल एरिया, बट अभी लिए मेरे को नहीं लगता कि भाई सेल होल्ड करना सही रहेगा, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया 50 को। So it hasn't break this 50, it just grab the liquidity and it's going upside. So I don't think you should stay in a sell side, try to come out from the sell and try to go for the buy. Okay, buy side का trade, punch trade कर दूं मैं, बाय करूंगा तो भाई अभी नीचे चला जाएगा। ट्रेड अभी तक भाई फुल बियरिश पे ही है, बट मैं अभी लूंगा नहीं, जस्ट वेट करूंगा ट्रेड को थोड़ी बहुत, आई विल टेक इट लेटर। बाय के लिए तो जाना चाहिए एक्चुअली, आई कैन सी सम ग्रैब द लिक्विडिटी this low। Okay, now it should need to go upside, but the thing is, if I take a trade now, my SL will be big, and you can see that it's going upside nicely. So if you want to hold your trade, do the trailing and hold your trade. Okay, okay,
ব্রেক করলে বেরিয়ে যাবো। Okay, hi, nice to see you, Zevi, after a long time. Yeah, it's going upside. Nice, but still, we have a yeah, we are doing great, brother. We are doing great right now. A little bit of complicated. You can see the market. We know that market can go buy side from this area, but due to the due to the zone and the big SL, we can't enter now. Okay, miss the sale signal. It's fine, brother, but we have to wait for the buy right now. Actually, it's a buy market for my side. Okay, but I want to see some breakout and all. Okay, and I want to enter now until it make a change of character and all. I can see the market is in a buy side. यहाँ से बाय लेकर 70 से सेल कर सकते हैं, 70 से 70 से 70 से ग्रीन रेड कलर कैंडल फॉर्म होता है तो भाई तब 70 से भाई सेल कर सकते हैं. Yeah, even that is my point of view, and I can see that it hasn't break this area. Okay, it hasn't break this low. Okay, it hasn't break the 50. So that is my point of view. I would like to go for the buy side. Okay, I would like to go for the buy side, but the thing is, I can't see any change of character and all. So इसीलिए मैं wait नहीं कर सकता, hold नहीं कर सकता, but देखना पड़ेगा. You have to take trade by your own, brother. I can't say you take a buy yourself. Just I'm giving you the analysis. If you think it's a buy, enter in a buy. If you think it's a sell, enter in a sell. Or if anyone gives you buy or sell, you can go there, brother. Very clearly, I've been telling you. Okay, where to go for the buy, where to go for the sell. Even though if you don't understand, brother, please don't take trade now. And you just following the blindly. Don't follow blindly. I just told you in a long time frame that market is in a downtrend. It will go to the 60, even though you haven't got any idea what is happening in market. Then after I told you it grabbed in liquidity, it has a high possibilities to go upside, but we have to keep our AC below 50. If 50 below candle close and form a one more red candle, then obviously it will go much more downside, which is like this area 3337. So it has a capability if it break this 50 below. So you have to understand, you have to take by yourself. No one is gonna tell you go for the buy from here. Okay, and no one is gonna tell you go sell from here. So if you understand the market, then enter in a trade. If you don't understand, learn how it works, then enter in a trade, brother. Okay. बायर्स को ट्रैप कर चिकी छोड़ा कुछ बीटीसी पर चल रहा है ब्रदर मेरा 5000 बीटीसी पर मैंने दिया था तुम लोग को एंड you guys missed the trade. I can see some trend in a buy side, so I took the trade and I was doing the trading SL. I told you clearly from like where is my trade from this area that I told you. I don't know. I haven't removed this so that you guys can remember. Told you to go for the sell from here. You can go for the buy. I given a target. Even I told you to go for the buy from this area also. Okay. I mean from like this pullback area, go for the buy. It hit. After I told you if it break this, go for this high. When it gone. So even though it came to this low area, it made a fake move. Again it gone upside.
So I'll just hold the buy trade. I won't go for the sell until this area close. Okay. So it has a high possibilities to go buy side only, not in a sell. So from this area, if you just see, if it maximum goes down, it will go down up to this low to grab the liquidity, then it will go upside only. So that is the reason I'm not cutting the trade.
Okay, you better look for shorts opportunity. It would be unwise to took a buy more than 150 pips today. Yeah, बात तो सही बोला तुमने brother. Okay, right now I can see like I didn't expect that much fall. I just thought here to here it will fall up to 60, but it gone more than 6, like 200 pips. Hey, too much fall, too much fall. I didn't expect that. But yeah, like, was there's a change character. Yes, brother. Like not yet, brother. Not yet. Still hasn't done any change of character. Okay. I didn't expect that much fall. I just expected okay maximum like 60 pips. Why? Because it's a downtrend. Okay, already maximum has fallen much more downside. So I thought that it will go up to 60. Then from that market can go retrace. But you can see that it gone from there also. It gone like 200 point downside, like 200. I can't believe that much fall. Okay, so just let's see what happen. Okay, এখন এন্ট্রি সেটার নিতে পারবো কি সেলে এখন নেও don't take now. Okay, just let it close this area. Okay, let it close this area then enter in a trade. So ये था पुल बैक जैसे देख सकते हो यहाँ पर पुल बैक बना रहा है. ओके, फ्रॉम हियर इट्स डूइंग अ पुल बैक. तो अभी के लिए तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा एंटर करने के लिए. थोड़ी बहुत वेट करके मैं एंटर करूंगा और 10 to 20 pips आई लेट द मार्केट फॉल डाउन साइड. Then close the candle below, then I will enter in a trade. ওকে, H4. ওকে, বিজিতে দেখো দেখছি. ওকে দাদা, আপনাদের কোম্পানিতে কাজ কি ভাবে করে কি সব বলতে পারবেন কি? আপনাদের কোম্পানিতে কাজ কি ভাবে করে, কি কি কাজ হয়? ভাই এতটা তো বলা যাবে না, ঠিক আছে, পরে বলবো ব্রাদার. ওকে, when I will European season open, when will European season open? Europe, like 1 o'clock I think. Yeah, from 1 o'clock it will open. Europe, it's like London. Usually I call London opens from 1 o'clock. Okay, a really complicated market today. I didn't expect that much fall today. I thought up to 60, but it gone up to 40. 200 pips it gone downside. And today morning when I started our stream, I just given you the clear okay example, and clearly I just explained you 1 day time frame it's a downtrend. 4 hours time frame it's a downtrend. 1 hour time frame it's a downtrend. So I told you clearly that market is downtrend and my target was up to 60. And if you see from like 80 to 60 it's like 200 pips. It fall, actually it fall. Not only 200 pips, it fall up to 400 pips. So that was the really a good moment. If you see ইনবক্সে মেসেজ দিলে বলতে পারবেন. টেলিগ্রামে তো আমি হ্যান্ডেল করি না, বাট কি আমি বুঝলাম না কি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু নো ব্রাদার. বুঝতে পারলাম না কি জানতে চাও. ब्रदर भी लाइक बाय लेता हूँ सेल जाता है, सेल लेता हूँ तो बाय जाता है. हो क्या रहा है? सो but actually it's gone 400 pips down. 3 ঘন্টাতে 550 ক্যাপচার করেছি. ওই যে ডে ডান আমার. सुपर ब्रदर सुपर, बहुत ही बढ़िया. सर बीटीसी प्लीज, बीटीसी बाय ब्रदर. ओके, बीटीसी इट्स अ बाय.
okay, which I took, and I was making profit in this currency. Right now you're gonna face a fall up to here. You have to check that. So from here to here, get a fall, then again it's a buy due to the Fibo retrace and the liquidity area. So if you drag Fibonacci from this low to this high, you can find out that is the Fibo retrace area. So if market comes to this area, liquidity area where the demand has and the Fibo retrace, you can enter in a buy. Mark the point 98.5. I so much of down আপনাদের ওয়েবসাইটে আছে oh my, oh my god. Okay, yeah. Yes, brother, we have website. আমাদের ওয়েবসাইট আছে yourforex.net, yourforex.net, तो उधर जा सकते हो। भाई इतना 28 तक गिर गया, यहाँ तक गिर गया 26, मतलब हो क्या रहा है मार्केट पे। ओके, ओवरऑल बाय साइड देख रहे हो या सेल साइड। अभी के लिए तो भाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से एक पुल बैक मिले, यहाँ से एक पुल बैक मिले तो भाई हम लोग जाएंगे बाय के लिए, नहीं तो भाई इस कंटिन्यू फ्लो पे तो भाई अब मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अभी। ठीक है, इस कंटिन्यू फ्लो पे अभी तो मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। लेट द मार्केट मेक अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोले तो उसके बाद मैं एंटर करूँगा ट्रेड पे, एंड आई विल ट्राई टू एंटर फ्रॉम दी लंदन सीजन। लंदन सीजन पे एंटर करूँगा, अभी एंटर नहीं करूँगा। ओके, अभी तो एंटर नहीं करूँगा, लंदन सीजन पे मैं एंटर करूँगा। अभी बहुत ही मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, तो नॉट गुड टू एंटर नाउ। ओके, मैं अभी एंटर नहीं करूँगा, लंदन सीजन तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद मार्केट को स्लो होने दो, उसके बाद आई विल एंटर। আপনাদের ভিআইপিতে জয়েন হলে 50-50 না, ভিআইপিতে জয়েন হলে ওয়ান টাইম পে ফর 1 মান্থ, তারপরে 1 মাস কোনো টাকা দিতে হবে না, কিন্তু একটা পেমেন্ট করতে হয় ভিআইপির জন্য। Okay, I'm done following FOMC. Okay, everything pointed to gold going up yesterday, but took it at now. Pure manipulation. हाँ brother, अभी के लिए तो भाई I am also not entering in a trade now. What I will do, I will enter in a London season. Let the market make a stable. इस पोजीशन पे तो भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था भाई 200 पॉइंट, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को मॉर्निंग आई हैव गिवन यू, मॉर्निंग बताया था कि भाई 200 पॉइंट तक भाई मार्केट गिरेगा। लेकिन ये तो भाई 400 से भाई 600 पॉइंट तक मार्केट गिर गया। एंड इफ यू सी भाई यहाँ से यहाँ तक गिरा, मतलब 3400 से 3300, मतलब मोर देन $1000 ऑफ मार्केट फॉल, मतलब इतना गिरा भाई।
सो ये था अनएक्सपेक्टेड, लाइक अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम लाइक दिस एरिया टू हियर। भाई देख रहे हो, मतलब if you have taken a trade from 0.01 also, you would have got $100 right now. Okay, right now $100 हो जाता है भाई। इतना तो भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ठीक है भाई, यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक दिया है, यहाँ तक आएगा, उसके बाद इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट जाएगा ऊपर। एंड इट डिड, ओके, इट ग्रैब द लिक्विडिटी, इट गॉन अप टू लाइक 50 to 60 पिप्स, बट उसके बाद फिर से मार्केट गिरा। इसके बाद मैंने यह वाला मार्किंग किया था कि भाई यहाँ से मार्केट ने पुल बैक करके ऊपर की तरफ जाएगा। इट ऑल्सो डिड पुल बैक, ओके, 37 टू इट गॉन 41, मतलब 40 to 50 पिप्स। उसके बाद फिर से गिरा मार्केट, मतलब नो एक्सपेक्टेशन ऑफ पुल बैक। मैंने इस पोजीशन पे एक ट्रेलर लिया था मैंने, एंड उसको मैंने लॉस करके किया था आज। ओके, एंड मैंने यहाँ से मैंने ये सेल भी लिया था, सेल पे मैंने प्रॉफिट किया था, एंड आई हैव गिवन यू दिस सेल ट्रेड ऑल्सो। मैंने इसका ऐसे नहीं रखता तो भाई मेरा यहाँ तक ट्रेड हो जाता, मैंने उसका क्लोज भी कर चुका हूँ। एंड उसका देखो $1600 पे मैंने क्लोज किया था ट्रेड को। ओके, तो ये था, मैंने लिया था सेल, जो भी मैंने दिया था, आई जस्ट गिवन यू, आई टुक अ ट्रेड फ्रॉम दिस। ओके, 92 मैंने लिया था, यहाँ से मैंने लिया था, फिर मैंने यहाँ पर क्लोज करके बाहर आ गया। जो था 75 था, मैंने उसके बाद ही क्लोज करके आ चुका था। ओके, या सो यहाँ तक मैंने क्लोज करके बाहर आ गया, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा। आई थॉट कि भाई 60 तक, उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, और ये तो भाई ज़्यादा ही हो गया। अभी भी मार्केट बियरिश पे ही है। ओके, भाई गोल्ड बाय कहाँ से जाएगा? रॉबिन, वेट करो, हम लोग वेट करेंगे लंदन सीजन तक, उसके बाद हम लोग लेंगे ट्रेड लंदन सीजन पे। बाय कहाँ से जाएगा? जहाँ से भी बोलूँगा वहाँ से नहीं जाएगा, अभी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग अभी वेट करेंगे। ওকে, অ্যান্ড তাহলে 50-50 কোনটা? 50-50 হচ্ছে তোমার অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য। তুমি যদি কোনো অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে দাও, আমরা প্রফিট করলে ওটা 50-50, ঠিক আছে? সো ইয়া, लंदन सीजन कब स्टार्ट होगा? 1 o'clock, 1 o'clock स्टार्ट होगा। 50-50 করলে কি পার্টনারের সাথে চেঞ্জ করা লাগবে কি? চেঞ্জ তো একবার টেলিগ্রামে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো চেঞ্জ করতে হবে কিনা। 50-50 করলে চেঞ্জ করতে হবে না, আর তুমি যদি বা চাও যে 60-40 বা 70-30 এরকম কোনো অফার আছে নাকি দেখে নিও। যদি বা থাকে তাহলে টেলিগ্রামে একবার কন্ট্যাক্ট করে দেখো, তাহলে ওইগুলোতে চেঞ্জ করতে হবে। হাই ইরফা, ওয়েলকাম আগেন brother, you can see that, okay, right now my expectation is like buy from every pullback, okay, my expectation कि भाई बाय करूंगा every pullback से। बट क्या हो रहा है कि भाई पुल बैक पे वी कैन गेट ओनली 40 to 50 pips, नॉट मच मोर। ओके, एवरी पुल बैक्स आई कैन सी आई गॉट अ 50 pips to 60 pips, but after that market falls like 100 to 200 pips. So really complicated market right now, because you can see like, I hope you can see this, it's a drastically fall, like
sometimes it falls whenever like any war or any news, but it's right now sudden fall that much, it's really mysterious. Okay, so we have to find out what is the reason. I didn't check out any news. Okay, but as I told you every time, so whenever you find out any pullback or retrace, try to take a buy from that area. And you can do only scalping. Why I'm telling you scalping? Because market is full bearish trend. And if you go opposite direction of your trend, then you can get only scalping profit, not a proper big profit. And let's see what happens, because really a very complicated market. Whatever I'm trying to take a trade, I get only 20 to 30 bits. So that is the reason I can't share you properly. But please do wait. You will try to take a good profit trade. And morning itself, I told you clearly and told everyone clearly that 1 day, 4 hours, all these things are bearish market. But it's not like that much bearish. Okay. So that was the 1 day and 4 hours resistance. And I thought that it will do the pullback. So it did a pullback, but not much really. How much it did? It did only okay from 51 to 62. That was like 100 pips. It did a pullback. Then after again it fall. Again it's going upside. Like try to do a pullback up to like here, 66. Then again it can fall. Okay, 34, 36. I mean, then again it can fall. Target, bro, I just told you, like, if you take any trade, you have to keep target regarding your lot size, your capital. Okay, I'm not gonna say any buy target or sell target. I'm just telling you the analysis. If you really want to learn, then stay here, understand the market structure, and where it can go buy side, where it can go sell side. Then after that you learn that, do practice, execute yourself. Okay, so to execute by yourself, it's not really interesting to say now, because I'm not taking trade now. So if I take a trade, I will tell you where to put your buy sell. Okay. So if you want trade, wait. Whenever I take a trade, you can execute as the same way. Wherever I put ASL and TP, you can do the same. Or if I don't take trade, I will just say you the marking area. If you think it's correct, then enter in a trade. Otherwise, you have your own decision to do. Okay, do that way. So I will not say 0.02. That's also fine, but I don't want to take a trade now. So, and whatever I say is also, it's like little bit of complicated. You can get only 40 to 50 pips. Then after market can retrace, and in this area you might get a loss also. So I don't want to take a trade now, and I don't want to suggest now. But I would say like every pullbacks, try to take a trade, and below the pullbacks you'll find out some candles weak. You can keep your ASL there, and you can go for the target like 1 is to 2 something. So you have to take a trade that way. Right now I'm not taking any trade, and due to the bearish trade, if I go for the buy also it's really complicated, or if I go for the sale also really complicated. So I have to think carefully, then after I have to enter in a trade. And even I just told you from morning, go for the sale. Okay, then after I told you for the go for the buy, if it break the 50, I mean if it doesn't break the 50, and if it break the 50 also, go for the sale. Okay. Photos with the 10 GBs of photos. Okay. Just do be patient. If I found out any other currency trade, so we will do that. Okay, first of all we'll go to the US oil. तो ये ट्रेड वीडियो खुला जाएगा वही कर देख चलेगा. Okay. US oil, I can see market need to come up to this area. Okay.
So when I say that market need to come area, that means it's a sale market. Okay, so you have to mark that zone, you have to wait for that zone, and you have to take trade by yourself. Okay, so that is the selling. So market need to come up to this area, and it's a 1 hour time frame, and it's a US oil. And clearly I have given you the yesterday trade also, just told you that if it break this high, market gonna come up to this area, then it grab the liquidity, you can see that market fall. So easily you can take a trade. Just I will mark the zone, try to execute by yourself. Whenever I say that if it break this high, try to go for the trade. So it is clearly you can see it break the high, and you have to target the next high, which is here. So when it grab, you have to see the candle is closing above this or what. If it cannot close above this, then go for the buy. You can keep your ASL below this, okay, candle closing, or you can go for the sell. I can see that it grabbed the liquidity, then it's going downside. So try to learn some, okay, SMC or ICT, whatever course you're doing or anything regarding market. Try to learn something, then enter, execute. So right now I can see some low area is here. Okay, and actually this was the zone where market is doing a pullback. So what I can do now, I have to wait for market to come up to this area or like this area if I enter now. So that is for example, but if you want to take a trade by yourself, do that, and you can keep your ASL like that. So it seems small, but you can see it's a 2:2 trade. So you can take trade like that. Wait patiently, let the zone come to your area, let the market come to your zone, then you can enter. So like this area also you can wait for this area. If it break this low, then you can get a 20 to 30 pips of scalping sale. So US oil you can do that way. Okay. Ethereum, let me check. Okay. Just the way I told you, it's a resistance, it's a high. So whenever it high break, target for the next high, which already I marked. So it's clearly you can get a buy trade. So the thing is, watch, mark the zone. Now I can see that it's not going upside. Okay, it's not breaking this high. So if it doesn't break this high, then market need to go downside. If it break this high, so 1 minute or 5 minute you have to wait. 1 minute or 5 minute you have to wait for your candle to close. So if you see it breaks this high 1926, if it breaks this high, then you can go to the 1963. Okay, so that way you can go buy from here to here. Otherwise, wait for market to come up to this pullback area, go buy from 1876. Give me a minute. Go down. Okay. So after that, GBP USD. GBP USD same as I told you. It following the trend. It will come up to this area. Look at this. Okay, it works. And if you ask me what can I do now in GBP USD, you can see here is the 15-minute order block. And market almost tapped the order block. So I will remove this area. Recent order block is here. So it properly hasn't touched. But if you want, you can enter in a trade from this area due to the order block. If I were in a position तो भाई मैं तो enter कर लेता, order block पे enter करता, and I'll enter in a trade from this order block. I'll keep my SL in this area, and my target will be this high, this high. Okay, so that will be my trade. Okay, next currency, that is the GBP USD. I'll write it down. So why I took this trade, I told you clearly, due to the order block.
বল ভাই। হ্যাঁ ভাই, কি করে? বল। হুম, 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 হুম। আমাকে আর কি হিসেবে করবে?
हाँ भाई, अभी बोलो। माइक तो ऑफ था। ऑफ यार से। बोल। हाँ तो रिकवरी स्कैल्पिंग। ओके। हाय। गोल्ड इतना क्यों गिरा? पता नहीं भाई क्यों गिरा। अभी तक तो मुझे इसका कोई अता पता है नहीं। आप बताओ क्यों गिरा, क्या लगता है, या किसी को अगर कुछ लगता है तो बताओ यार, मेरे को पता नहीं क्यों गिरा। म- মাতা দাদা আপনার নাম কি? মাতা দাদাটা কি জিনিস ভাই? আমার নাম অভিরূপ। শওকত শেখ। हाय ब्रदर। ट्रम्प ने बोल दिया स्टॉक मार्केट विल बूम टुमारो एंड कल उसकी मीटिंग है। ओके, देखते हैं भाई। भाई लाइव कब आते हैं? भाई 10:30 से 11 बजे तक आ जाएंगे। 10 भी आते हैं, 10 से 11 पकड़ लो। अगर कोई काम हुआ एक्स्ट्रा तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है। सबने स्टॉक मार्केट के हेज छोड़ दिए। गोल्ड गोल्ड का फॉल। कल ट्रेड मीटिंग है, ट्रम्प ने ट्वीट किया। ओके ভাই, সেটআপ হবে কি দাদা? মনে হচ্ছে তো না। लग तो नहीं रहा।
I am new here. Welcome to our live stream, brother. How by 3345? Right now, I don't think so. After down market, how by after down market 3345? I don't know, bro. Market is very unpredictable right now, so I can say. Abi uçağı var. Utilization, in the advertising, in the advertising, Okay, so what about BTC side? BTC already have explained. Okay, so गोल्ड बाय करे क्या भाई?
गोल्ड अभी नहीं, इस जोन को ब्रेक कर ले दो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चीजें करेक्ट हो ले दो, उसके बाद एंटर करना ट्रेड पे। ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो ले दो, उसके बाद एंटर करना ट्रेड पे। अभी तक तो भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं हुआ, सो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड है। लेट इट डू द चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर्ली, देन वी कैन एंटर। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ से होगा? 5 मिनट पे ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए। सो 5 मिनट यू नीड टू ब्रेक दिस ऑर्डर ब्लॉक। Okay, it need to break this high, then only we're gonna get a change of character. After that, I will try to go for the buy from this area. Okay, let's see what will happen. So every pullback is okay, every pullback is obeying, but the thing is we can't enter in every pullback now. So we can get only 40 to 50 pips. We are not getting a proper trade, right? इस GBP setup is valid. Okay, gold buy करे या भाई, मैंने बताया अभी नहीं। Okay, wait करो, GBP USD setup. So GBP used to just mark the zone which is order block here. And if anyone want to try to take a trade from this area, you can enter, yes, but try to enter with very low risk. Always I prefer cause you can see here is also a zone and here is also a low area. So you will get a demand this area. So you have a one demand here, you have a one more demand here. So if it break this, then obviously market gonna come up to grab this demand zone area and some liquidity from this area, then it can go upside. My point of view is like buy. Or if break this GBP USD, then you can see some pullback is here. Then I believe if order block breaks, then market gonna fall up to this area. Okay, okay, surrender trading gold. No, brother. I'm just checking the zone. If I can enter, I'll let you know. Okay.
ছেড়ে দিয়েছি। আমি করি এখন, আমি এই যে এখানটায় ব্রেক করলে তাহলে আমি নেবো। ओके। Hi to Drew. Welcome to our stream. So just waiting for this breakout, and if it break this, then we're gonna get a change of character in that. Then what we can do, we're gonna try taking a buy from above that line. Okay. अभी मैंने बताया था भाई, लाइन ड्रॉ किया हूँ, बताया लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा तभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तभी मार्केट जाएगा सेल पे। भाई तुम लोग लिसन करते हो कि नहीं? बोलो। कोई बात नहीं ब्रदर, इट्स ओके, बट क्या है कि अभी एंटर नहीं करेंगे हम, ठीक है? इसको ब्रेक करने दो, यहाँ पर ब्रेक जब होगा ये वाला लाइन जो है ना, 3342, देन ओनली इट विल मेक अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मार्केट ने एक पुल बैक दे दिया, तो भाई तब हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई एक बाई पे जाने के लिए। अभी भी आई जस्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई 1 o'clock पे लंदन सीजन स्टार्ट होने दो। लंदन सीजन पे एक एशियन का लो मार्किंग करेंगे, ओके, एंड एशियन का हाई मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये हम लोग अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। सो आई विल चेक दैट आउट, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर से बाय करने के लिए। भाई अभी देखोगे तो भाई इतना गिरा भाई, $96 तक मार्केट गिरा, ओके, बट टू मच ऑफ फॉल, ओके। इसीलिए भाई अभी वेट कर रहा हूँ मैं, मेरा भी लॉस हुआ, मैंने बाय पे लिया था छोटा सा पुल बैक के लिए। लेट्स सी। ओके, अभी नहीं लिया ब्रदर इस अकाउंट पे, आज तुमको नहीं देख पा रहे हो। एक मिनट जाओ। सो इट्स टाइम अलग है, बट लिया था भाई, कल रात लिया था मैंने। ऐसा नहीं कि भाई हर बार लेना है, 1150 पिप्स तक प्रॉफिट मिला हो, और क्या चाहिए।
Hi Connect Trader, welcome to our stream. भाई, व्हाट डू थिंक गाइस, आप लोगों का क्या लगता है मार्केट पे बाय जाएगा या सेल जाएगा? लेट मी नो, एनी आइडिया लाइक बाय साइड और सेल साइड? एनी पॉइंट ऑफ व्यू गाइस? हाय रॉबिन, आपको क्या लगता है गाइस, मार्केट पे क्या मूवमेंट आएगा अभी, बाय की तरफ या सेल की तरफ? हाय, यू थिंक बाय? सर बाई की ओर आए तो अच्छा वाला तो हम गए। मैं तो भाई गए, मैंने कट करके बाहर आ गया था, मैंने एक बाई लिया था, ठीक है, लेकिन इतना फॉल करेगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने यहाँ से एक बाई लिया था, मेरे को 40 to 50 पिप्स मिला। फिर मैंने सोचा कि भाई ये सेल लूँ नहीं तो टीपी लूँ। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट भी रख देता तो मेरे को 50 to 60 पिप्स मिल जाता, क्योंकि मैंने पुल बैक पे लिए था एंड इस पे 100 पिप्स आया था ये वाला। सो यू कैन सी दिस लो। Okay, just I will drag this and you can see this low, which is 51, right? 51 to market gone to, okay, 61.8. So it already gone 100 pips, but in that I took a trade and I got 50 to 60 pips. Then after I just left that and I cut it this area, this candle closing. Okay, so I got a like huge loss, like 100 pips of loss in my personal. Okay, so I took that and I lost in that.
And right now, I just waiting for this change of character. If you do the change of character, then I will enter in a buy side. I can see the market is still in a downtrend, so I'm not going in a buy side right now. Okay, गोल्ड में buy आ सकते हैं बताइए भाई तुम मत रहो ब्रदर यहाँ लैस लो ओके जस्ट टोल्ड यू ब्रदर यहाँ पर बाय आ सकते हैं मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो तो भाई बाय कहाँ से आएगा मार्केट को स्ट्रक्चर को चेंज करने दो उसके बाद ही तो बाय आएगा ना मार्केट का स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हुआ तो भाई कैसे बाय आएगा राइट एंड लाइव पे ट्रेड देते हो क्या हाँ ब्रदर हम लाइव पे ट्रेड देते हैं डेली हमारा लाइव स्ट्रीम को देखो नहीं तो हमारा डेली का लाइव स्ट्रीम रिवाइंड करके भी देख सकते हो हमारा ट्रेड देते हैं रोज ही लास्ट 1 वीक का हमारा परफॉर्मेंस देख सकते हो ओके 3361 okay hi what about the BTC please I just told you brother I just told you BTC I think you should mark the zone and take a trade by yourself huh? Look at this ether target and it made already break of structure so it gone already and my maximum target was this high now please don't ask me again and again okay so it break this high I just told you it will come up to this area it gone now we have to see breakout if it break this high then again go for the buy others just wait 3361 आ सकता है क्या भाई 3361 आना तो चाहिए भाई उसके लिए तो भाई हम लोग को वेट करना पड़ेगा ना 42 ब्रेक होना चाहिए ना 42 ब्रेक हो जाए तभी आएगा मार्केट ओके ओके यू टूक द ट्रेड ग्रेट ब्रदर so it's fine okay but please try to do risk at your own I'm not taking any trade now I just given you the analysis if anyone want to take a trade you can go for it
देखी গোলটা অবস্থা কি ওই সাইডওয়েজ हो गया। সাইডওয়েজ তাও যাবো না হ্যাঁ ইয়ে শোনো শোনো শোনো
Okay, so हाय टू एवरीवन दोस्तों वाचिंग बीटीसी बता दो भाई भाई ऑलरेडी मैंने बीटीसी बता चुका हूँ ऑलरेडी मैंने जीबी बीस्ट आई हैव टोल्ड यू आई हैव टोल्ड यू कोड एवरी करेंसी आई हैव टोल्ड यू सो बार बार भाई जो जोन मैंने मार्किंग किया वही जोन ही है जोन कोई चेंज नहीं हुआ ओके सो अगर आपके टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हो हाँ ब्रदर मैं मेरा टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ करता हूँ सो एवरीथिंग इज ओके इट्स फॉलोइंग द ट्रेंड आई थिंक let's see what happens. So let's see the GBP then. You're saying that it's going amazing. Oh, it's a GBP JPY. It's a GBP USD. Okay, yeah, it's going amazing. So from this area, already it gone 20 pips and above. Gold, don't expect any trade right now. I'm just doing a research and I can see some trend line breakout, pullback. So no trade now. Okay, I won't be taking any trade now. I have to wait for zone to take a trade. गोल्ड पे कोई ट्रेड मत करो अभी सबर करो प्राइस एंड ट्रेड शुड नॉट मिस अ गोल्ड लुक डेली चार्ट टुडेस गेम ओके I already checked daily chart and daily chart I just given you one day resistance which was here so I given you the sell from this area to here okay and that continuous sell you can see it fall up to this area so if you ask me daily chart also same things you're gonna find out there's nothing no one day chart and it's full bearish as I can see. Okay, so what do you say? I told you the market will come up to this 50 to 60 area. So it can be the 60, which I marked, and I have given a trade from like 80 to something. Okay, overall I can see some bearish move only. No bullish, but let's see what happens. It's a 43 chala gaya. Okay, that was the zone which I marked, and I took a trade. I is breaking the trend. फिर से मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है एक पुल बैक देगा उसके बाद फिर से नीचे जाने का चांस है सो इफ इट कम 43 43 से 49 60 pips ASL you can keep like that and go for the short so try to go short from this area let the market do the pullback so that you can go again a short like this you can keep your ASL and this so it's obviously if you see 1:1 trade this one but after that if you want to drag you can drag your target like up to this flow but I'm not taking trade now okay right now I can see in 1 minute it break the trade so obviously it's a sell and it will come up to 38 20 pips you'll get a sell trade okay 20 pips you're gonna get a sell trade so you don't taken any buy trade or sell trade no I haven't taken any trade right now I haven't taken any buy nor even a sell
I'm just waiting for the zone. So right now, I don't think taking trade will be a good decision. By the way, it's a downtrend market, and I can see some pullback is doing now. And right now, if I take a trade, I will go for the sell only. Okay, why I'm telling you? I just told you clearly कि भाई market is doing a pullback. Market pullback देने के बाद sell जा सकता है. So let's see, let's wait. Have a okay. So I hope you can see the market. So hello sir, which time frame you start live session daily? I start from morning 10:30 and I stay up to evening. Okay, so I start from morning 10:30. And okay, hi to see Buzil with us. So you're from Africa, you want to learn. Okay, so that's great. Nice to hear, brother. I can teach you, brother. First of all, you should have some basic knowledge regarding trading and how to watch chart. So you should know what is support, what is resistance. Try to learn that. So support resistance very simple. Whenever you see market is like tapping 2 or 3 times in a zone in the downside, that is support. Or if you tap many times in a above side, that is resistance. So simple way you can call that support and resistance. So right now, if you just see like this is the sideways market, but sideways market, if you want to take a trade, you have to fix your time. So if it depends on like what type of trade you want to take. Okay, so if you are a scalper, that means you have to watch 1 minute or 5 minutes. Or if you are a swing trader or you like to hold your trade, then try to watch 30 minutes and 1 hour. So choose your time frame, choose any one currency. Then after, what you can do, you can mark some support and resistance. So whenever market touch twice and 3 times, so draw that as a support. Just the way I hope you can see some GBP, USD, GBP, JPY. Okay, so that is the like resistance. So wherever you can see 1 time, 2 times, 3 times, like holding market, and you can see like 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. That is the support. Try to draw support and resistance. You can see this is the resistance. So try learn from basic. You can learn easily. Okay. So that is the resistance. So draw that whenever you see the resistance break. If you do the pullback like break, do pullback, go for the buy. So I do take trade like that and I make some profit in it. Okay. Hi, Adarsh Jha. Batao, brother. So, hilarious spot. You say that it will go as a buy side. I don't think so. मेरे लिए हिसाब से तो भाई मैं सेल पे जाना चाहता हूँ. ओके, मेरे हिसाब से सेल पे जाना चाहता हूँ मैं. वाई एम टेलिंग यू सेल पे जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ट्रेलर ब्रेक हुआ है इसीलिए बोल रहा हूँ. बट नॉट नाउ. आई वोंट एंटर सेल राइट नाउ. आई जस्ट टेक सम टाइम. I'll take some time, then I will enter in a trade. So I can see some trend breakout like that. So if it goes up to this area, I gonna enter in a trade and I'm gonna keep my target again same as sell side. Let's see. Let's see what happens. Yesterday you were telling sometimes that enter 10 to 50 pips pull back, then you enter again the way.
we reduce loss. Kindly explain that properly, please. Okay, that is also correct in here. So first of all, you should know what trade you're gonna take. Okay, others, you should know what trade you're gonna take. So you wanna take a sell trade. Malo, okay, if I were in a position and I'm thinking to take a sell, and I have a balance of $1,000, then what will be my lot size? Many of them take 0.20, many of them take 0.30, but for my side I will take a 0.10, which is 10% of my equity. Okay, so before taking any trade, try to calculate your lot size. Give me a minute. Okay, give me a minute. Okay, so yeah, then after what you do, I have $1,000. I trade with 0.10, and I can see like my ASL gonna be big, so I don't want to take a trade with a 0.10. Why? My SL is big. So what I will do, I'll divide my lot size. So think that I have taken a one trade from this area, which is like this area. I have entered, and I can see the market is going upside, and it gone 15 to 20 pips. So when it goes upside, you can add one more trade. So 10 to 15 pips gap, you can add one more trade. Okay, and you can divide your lot size. So you have taken a one sale from this area, market gone up 10 to 15 pips, you added one more trade, and market came down. So what you can do, second trade you can cut out, and you can hold your first trade. So that means you got a one profit trade regarding that. And what happened if it goes opposite also? Already you have entered with low risk like 0.03. Again you have taken a trade 0.03. That means already your 0.06 completed, and you have a 0.04 in your hand. Okay, so मान लो और एक time और एक, okay, so you're gonna enter again one more time. So you're gonna enter from here 0.04. Okay, so that means your overall 0.10 lot size has been complete, and you're gonna make a good profit regarding that. So you enter from here, market gone up, and you can see market came down. So your second trade is in a profit. And if you think the market gone again upside, you enter one more trade and calculate your risk. And if you think your ASL is 60 pips or 70 pips, divide that lot size and enter slowly with the adding layer. So that way I take trade. So that is one strategy I use. Second strategy, so which is like pullback trade. Okay, so pullback कहाँ से trade मिलता है? Let me show you like some pullback trade which I do take. Okay, and pullback like this euro odd. So this is the pullback trade which I took, and it's running 100 pips, and I have given this trade for a long time, and my target is up here. So you can see some support break. Okay, support break. What did market do? Did the pullback. It did the pullback, and you can see market came almost that area. So I can see that it is inside the support only. So directly sell up to here. So you got a sell trade. Okay.
ओके, सो आज ट्रेड दो एक दोगे कि नहीं? नहीं देंगे भाई। ट्रेड लेना है तो जा सकते हो, जो देगा। ओके, so that way. So sometimes you can see this is also a pullback trade. Whenever I see the market goes down, I can see some liquidity area here, also a pullback. I enter in a pullback, and always I try to keep my asset below the pullback area. Okay, and I take a trade like that. I have taken many trade, many profit also I made. And if you see the BTC, USD, BTC also, which I told you to go for the sale from this area. Okay, is Hala BTC. That is also same. You can see some pullback, market doing a pullback, and told that market will go downside. Right? Go on like that and go on high side. Same as like US oil also you can do that. US oil pe A wala. Where the market was this area, I told you go for the buy. Okay. I told you go for the buy from this area. So you can see if you miss the chance, you got a one more pullback, then you can see market gone up to upside. Even I told you from this area also, whenever candle break above this, try to take a buy. So you can see this arrow. So each trade I have given you with a example properly. So 10 to 50 pips you can, okay, see. Okay, cannot see the full screen. Actually, we are doing a landscape. I mean, like portrait we are doing. Just try to adjust that way. And if you want to see something, you can see like 70 to 80%. You don't have to see full screen. You can see up to this area. Okay. Okay. Tell us in your loss till date. Shows your profit and loss till date. Why do you want to see, brother? Okay. Why do you want to see? Ushman Khan. Hi, brother. Welcome to stream. Did you post that VIP Euro odd? No, brother. Whatever trade I take personally and I share in YouTube, not in Telegram. So if you see any trade in a Telegram, so I don't post anything. I just take personally. I just said, yeah, I read, brother. I read your comment. So why do you want to see? What makes you curious about seeing? Okay. Okay. How many times your account has been blown up? I don't do that much risky trade, so whenever I get to draw down, I do recover also. So not in a blown up, if you ask me. भाई लिक्विडिटी बताओ लाइव बीटीसी में। लिक्विडिटी नथिंग ब्रदर, जहाँ पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्म होता है। लिक्विडिटी मतलब ओके, मान लो 10 बंदे बाय कर रहे हैं, 10 बंदे सेल कर रहे हैं, सो दैट पोजिशन पे जो सेलिंग एंड बाइंग पे हो रहेगा उसको एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी तुम बोल सकते हो। ओके, liquidity, like there are two three types of liquidity you will find out, like liquidity sweep, liquidity trap, liquidity grab. Okay, so that are so many times. Okay. Okay, so like that. So if you just see some trade like this area and you got a low here, okay, so how you find out a liquidity? So first of all, if you just see some low area, what you have to do, you have to wait for your, okay. Okay. What you can do is just slowly, okay, just slowly I'll tell you. Like you can take this, okay. So this was the low, and below that area you will see, and you can tell us a liquidity. That means from this area, market has gone goodbye. You can see this candle, and it gone goodbye. So that means here is the buyers, okay. And you can see market just came, it did sweep liquidity,
and grab and gone upside nicely. So liquidity means where the transaction. So many buyers, sellers doing a buy and sell. Okay, that position will form a liquidity. That area like demand area. Okay, so demand area you can calculate as an order block. So wherever order block there you will find out a liquidity. There you will find out as a demand. So smart money concept is like three four things are mixed up, okay, and called as a same. Okay, so it is really a big concept about liquidity. If I know, or if you know properly about the liquidity, then it's great. You can make a good profit in it. So like that, whenever you see some low area, okay. So even I just marked this area. So if it touch this line, that means liquidity equal. And sometimes what it happen, if it close one candle below, that means it's a liquidity graph and it goes upside. That means it's a liquidity graph. Sometimes it happens. I'll teach you rightly, okay, later also. Okay, really appreciate. Thank you, brother Zevi. Okay, gold any update by setup? I said, yeah, okay, gold down now. Yeah, gold for my side, it's a down for my side. I just told you clearly why I'm telling you it's a down. Okay, so look at this. Okay, I told you it's a down, and you can see some area and how much it can go again after this area. And I told you every time trend line break, market gone. So I was expected to do a proper pullback. Otherwise, I told you enter with a division of lot size. So that way it works. Okay. Okay. So can you make $100 to 2,000 in a week? That's my choice. If I want to, yes, I can do that. And if you think that if, all time, I can't make it all time. Okay. Because sometimes it's hard to make that much 100 to $2,000 in a week. Okay, and try to say something like logically. Okay, so 100 to 2,000 means how much percentage of return are you have you calculated? It's like not only 100 percentage, it's like 2,000 percentage of you're expecting a return in a week. So are you serious, bro? Okay, speak something logically, bro. Those who are big traders, they don't expect like $100 to 2,000. If they are lucky, and if the market works regarding that strategy, then you can make. Otherwise, you can't make. Okay. And thank you for your concern, brother. I'll blow my account. Doesn't matter. Okay. So if I lose, I'm gonna lose my capital. Nothing lost for you, right? So just leave it. Yeah. Are you able to do that? $100 into 2,000 in a week. If you think so, that means $100 per week. Can you do the constantly, continuously? So you think logically, bro. It's like out of like question, whatever just you want. Okay. Okay. Hi to Asdeep. Welcome to stream, brother. Thank you. भाई क्या लिक्विडिटी स्वीप होती है तब प्राइस मैटर करता है क्या? हाँ, प्राइस तब भी मैटर करता है लिक्विडिटी जब स्वीप होता है. ओके, दैट टाइम ऑल्सो प्राइस मैटर करता है. समटाइम्स जब लिक्विडिटी स्वीप होता है तब तक हम लोग को देखना चाहिए वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं. लिक्विडिटी स्वीप पर देखना चाहिए वहां पर कोई पुल बैक्स है कि नहीं. एंड इफ इट्स अ प्रॉपर पुल बैक्स एरिया देन लिक्विडिटी मैटर करता है. ओके. ओके. ओके.
Hi to XMKR. What's a good name, brother? Yeah, after a long time. That is also true. He's busy with some other work, but he will come. Okay. Okay, you made through meme coin. Okay, really appreciate. Okay. Okay, I really want to say thank you for your concern, brother. Sam. Okay. So great, great. Nice to hear, brother. Okay. Thank you for your opinion. It will blow 99% of line. Okay, I got it, brother. Anything else you want to say? You can say now, brother. Okay. Okay. Anything else you want to say? Done? You may leave now, brother. Okay, your name is Vinayak Mohan. Okay, Vinayak. I remember that. भाई 15 मिनट के तो वो भी है ना तो मार्केट यूज ओके यूज लेना चाहेगा क्या 15 मिनट का वो भी लेट्स सी which position brother what is the okay order block are you saying this order block or like above order block this is not a proper order block if you ask me okay which one brother SD if you ask me this order block that means yeah I have to see this pull breakout okay then all I can say Anik hi brother कैसे हो क्या हाल चाल क्या चल रहा है सबका आज थोड़ा मार्केट ओके ओके जैसे today is like bad market but we'll try to take it अच्छा ओके गोल भाई स्पेलिंग ठीक से लिखो एंड कॉपी पेस्ट डोंट डू गोल्ड भाई देखो भाई इस पोजीशन पे यू कैन डू ओनली स्कैल्पिंग ओके इस पोजीशन पे यू कैन डू ओनली स्कैल्पिंग छोटा मोटा तुमको सेल मिलेगा छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा ओके ओके so like if you go for the buy you have to keep your ratio like 42 that is like 70 pips so like small scalping buy small scalping sell not really a good market you can see like 5 minute time frame like 15 30 minute 35 minute and if I calculate overall it's like 40 minute pass market is doing a time pass between these two areas so I have to wait for this zone area to break then after we will take a trade okay भाई इंग्लिश मेरी वीक है थोड़ी हिंदी में बोलो करे प्लीज ओके ब्रदर चीज एक ही अभी हम लोग बाय पे नहीं जाएंगे और ना जाएंगे सेल पे वाई एम टेलिंग क्योंकि देखो तो भाई मार्केट पूरा अभी साइडवेज पे चल रहा है एंड ये तो भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है तो चांसेस है कि मैं सेल की तरफ तो जाना चाहिए मार्केट को फिर से वो पुल बैक दे रहा है साइडवेज पे चल रहा है मार्केट एंड आने दो कोई ब्रेकआउट मिलने तो उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे ओके लेट दी ब्रेकआउट होने तो उसके बाद हम लोग लेंगे ट्रेड हाय हाय टू भारत दास
Okay, 3380 to 3370 is the order block. Have to carry it. Okay, so you're doing trade without SL. Yes, because I'm not sleeping. That is the reason. Okay. And 3380 to 3370 is the order block. 3380 to 3370. 3380. So which is like this area you've been telling, right? So यहाँ पर 80. Yeah, eventually that is the okay order block there, and we're gonna go buy. Actually, I will try to go buy, but the thing is, I have to wait patiently. Take some time. I'm gonna enter, and let's see from like 50 to 67. I'll just grab, yeah. It will try to fill this imbalance gap area. Obviously, it will go upside, and it will fill this imbalance area. Okay, correct. ST. That is the 15 minute. Yeah, you need to go upside. But what you can see is, so it's a 15-minute time frame, right? So it's a 15 minutes. So you can see 15, 30, 1 hour. So 1 hour pass, like market has been like a little bit of sideways. So let break this consolidation. Then after we're gonna enter in a buy. तो थोड़ी बहुत एक consolidation को break करने दो. उसके बाद हम लोग लेंगे बाई की तरफ, क्योंकि हम लोग को 80 पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो हम लोग तो भाई बाई पे तो जाएंगे, बट कंसोलिडेशन को ब्रेक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विल टेक इट. सर आर यू होल्डिंग अ ट्रेड, कैन यू शो मी? which actually I holding a two trade, which is even I have given this trade in a live, and I'm just holding the trade because I can see I'm making a good money in that. So I'll just do the trading. So if I think it's going down, I will come out. So first of all, I took this euro odd, which is from this pullback area, and I have mentioned and given you like this will be your SL, that will be the target to the support area. Okay. So SBR support become resistance up to that. Or if it break and come below this area, then I will come out like 175. Okay, I'll come out. And one more trade, which is BTC. BTC also I given it clearly. You can do rewind and you can watch every trade whichever I give you. I'm just holding this trade because I got a good profit. I was thinking to close the trade, but I saw that it's continuously going upside, so I just left. Okay, so I just holding and I can see that it came up to here, which was sale, and due to the order block, I took this trade, and I was holding the trade. Okay, so every pullback, every zone you can enter. Again, it's going to 99.4, so it's gonna go again 100k. And if I'm not wrong, I given this BTC trade before also. Okay. Okay, so from 330 buy from 330. Now it's a 42, right? So 330, little bit down move, right? Come on, I think from this area will be a buy. Okay, from 50, 3350, 3350, we might get a buy market. Okay, just leave it C4. So he's sharing his opinion. Everyone has their opinion, right? So he's saying that he says something. Let it, okay, let it be.
Eventually, if you see every trade, I don't personally take that much trade in the night time. Whatever trade just mark for you, that trade only I take. Okay. So whatever zone I just mark, I just take a trade. So I just mark this area. So if I see again, what happened to GBP? Oh, it's a GBP JP, it's going upside. So like that, I mark the zone, I see that, and if you guys haven't taken trade, I take a trade. And I don't want to take a trade in a live because everyone shares that different opinion and says that why did you take a buy, why you sell, and what. So everyone shares. Okay, again it gone downside. Let's see, brother. Yeah, try to. Okay, I have just nothing to say. Whether you have put your ASL right, so try to be hold your trade. Let's see what happens. So I like one. Hey, we have a mini account brother with us. Okay, cause if you ask me, I had a three account. One is like your forex investment, your forex company. Okay, there are so many account I had. I had one more account which is like $25,000 also. Okay, so I had many account, and sometimes we do trade regarding the account. Sometimes we have a team members. If someone takes a trade, I just leave. He handle the account. I handle another account. We do that. Actually, I have a many account if you ask me. Okay, cause we have a team, so everyone do take a trade, and sometimes we do manage everyone's account, like big account, like investors. So if I take a trade, he just leave the account, or if he take a trade, I just leave the account that day. He took a trade, so I just leave that account, 10,000 account, and he took a big account right now. If you see why market full of sideways, okay. Yeah, I do that. Yeah. So I have to say honestly, and even though I don't want to share anything, okay, but even though you guys are curious, I will saying that, okay. So you got it, you heard it, so I think it's enough, right? So I'll try to take a buy from 3350 and gonna go buy side. Right now, I can see some sideways market in a 15-minute time frame, or if I go to the 5 minute, I hope we can see so many candles
which are doing a accumulation. You can see that is doing a accumulation, and let's see what happens. Okay, if you do anything like breakout or anything, then we will enter in a trade. Mm, let's see the other currency. So US oil going buy side from this area. So if market comes here, you can try again one more time as a buy side and keep your target. After this, pullback. Ethereum also same. Let's see. Okay, just the way you can see, it will go buy side. It break this high, it will go buy up to this high. So SLTP, you can keep regarding your lot size. That was the resistance which I marked. That was the support. And so I told you, if resistance break, try to go next high, which is like this area. I marked, and it's going upside. So up to here. Okay. And next, GBP USD also I marked. So this is your resistance. That is your TP. So regarding trade, this is the order block which I given just gone 20 pips. Then again it's going downside. So if it break this, and you can maximum hold your trade up to 132507 to this low, because I can see some liquidity like this area and this low area. So if this all break, then high probability of chance market to go downside. So what you can do that time, you can go for the sell. If it break this area, still we have a little bit of hope of going buy side. Okay, little bit of hope. And Euro USD. Euro USD also same. If it break this low, then it will go down. So it's happening same as GBP USD. GBP USD also going down. Euro USD also going down. GBP JPY. So GBP JPY is going upside. I just told you, if it goes upside from here, it will go sell, but not exactly to our point, but we got a like 70 percentage. And from here to, you will get a this high of target. Okay, so it's going upside for GBP JPY. Same as all BUSD, it hit my SL. It can't break the high, entered in a trade, but what happened? We got a 80 percentage of our profit. Then after it hit our SL. So what I can see, यहाँ तक तो भाई आएगा मार्केट, उसके बाद मार्केट जा सकते हैं बाय के लिए. आफ्टर दैट USD JPY. Okay, so look at this, it's going a buy side. So it did a breakup structure and up to here, or if it break this candle below this area, then market यहाँ तक आएगा. So always wait for a breakout, candle closing, trend. Okay, then you can take a trade properly. Gold right now it's in a sideways. एक तो by buy side, other is sell side. So in a 5 minute time frame, we can see it's doing accumulation. So we can take a trade in a gold, but we can try taking trade in other currency with a proper explanation. I am just giving you. And BTC also, I have told you, it's a buy trade, and every buy is going on. So first target was here, second target was here, third target you can see it's going good buy side, and even it will go now also buy side only it will go, because if you see it did a pullback also. So you can keep your ASIN below this, and target you can keep 1:2 if you want to. Okay, still it's a buy market, BTC. And ये है
यूरो और ट्रेल लाइन था, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट किया इस जोन पे, इस हाई को फॉलो करके गिर गया। सो यूरो और पे तो अभी कोई ट्रेड नहीं लूंगा मैं, ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, बट अभी भी देखूंगा तो भाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते करते जा रहा है। सो लेट इट डू दी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ से करेगा, यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, यहाँ पर भी हो गया। सो ये वाला जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करने दो यूरो और पे, यू कैन एंटर अगेन अ ट्रेड। ओके, हाई टू Kanagavel, Ayagutti, Ayagutti bro, Kangavel. So it's you're from like Tamil Nadu, right? Ayagutti. You can say like no, I don't want to say something. If you are Ayagutti, then who is Chalagutti brother? भाई यूरो यूएसटी पे अभी मैंने बताया था भाई सर, ठीक है। देखो, ट्रेडिंग के लिए भाई पेशेंस होना चाहिए। कोई भी चाहते हो कि भाई मैं अभी एंटर करना चाहता हूँ, ये डिपेंड करते हो आपके ऊपर। सो यूरोस्टी पर मैं, मेरे को लिए जितना भी हिसाब से, मैं तो भाई इसको फॉलो करके छोटा सा एसएल, ओके, आई विल गो फॉर द बाय साइड। एंड मान लो मेरा एसएल हिट हो गया, देन आई विल गो फॉर द सेल साइड। सो इट्स अ स्मॉल एसएल, इफ यू हैव, you can take 5 to, okay, 4 to 7, that means like 30 pips, okay, 30 pips of ASL, $0.013, $0.026. So, or you can try taking trade in a demo account for your practice. If it works, then do take a trade, or otherwise do research, ओके। अदरवाइज डू रिसर्च कि भाई बाय जाना सही रहेगा या सेल जाना सही रहेगा। आप भी एक बार रिसर्च कर लो, आपको जो सही लगे आप वो वाला ट्रेड ले सकते हो, ओके। Don't worry, brother. GBP USD need to go upside if it obey Euro USD. So Euro USD and GBP USD both are like 70 to 80% similar. जहाँ पर GBP USD जाता है वहाँ पर Euro USD भी जाता है, लेकिन समटाइम वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाता है GBP USD पर, ओके, बट इट वर्क्स, ओके। 70 to 80% वर्क करता है अभी, ठीक है। मेरा टारगेट है कि भाई यहाँ तक तो भाई हिट करना चाहिए मार्केट को। ओके, was just cross checking, okay, buy on the same page, okay, but on the same page बाई करूंगा विथ द सेम 4 आवर्स, ओके। एक बार आपने भी रिसर्च कर लिया, क्रॉस चेकिंग कर भी कर लिया, ठीक है। सो यू कैन ट्राई, आई कैन से, एंड ऑलवेज एवरी ट्रेड पर भाई लो रिस्क पे एंटर करो। आएगा था भाई कुछ आएगा, जाएगा था भाई आपका कम लॉस जाएगा, ओके। सेम एनालिसिस, सुपर ब्रदर, सुपर, ओके। अभी तक एंटर नहीं किया, इट्स ओके, फाइन। इफ योर एनालिसिस आल्सो सेम, देन यू कैन से कि भाई मेरा एनालिसिस गलत है, ठीक है। आप खुद ही देख के आपका भी एनालिसिस सही है, तो फिर अभी एंटर कर सकते हो। सो मैं तो भाई तुमको नहीं बोलूँगा कि भाई तुम एंटर करो या ना करो, क्योंकि मैं सिर्फ एक, ओके, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, एंड जस्ट ऊपर की साइड से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा खासा मार्केट मूव भी किया है, ओके। एंड समटाइम्स और एक चीज भी बोलना चाहता हूँ, वो क्या होता है कि भाई मान लो कि भाई तुम सपोर्ट देखकर बाय कर रहे हो, बट और एक चीज तुमको जानना चाहिए कि भाई हर बार सपोर्ट पे बाय मत करना, हर बार सपोर्ट पे सेल भी मत करना,
क्योंकि वेन एवर यू टेक अ 2 to 3 टाइम्स सपोर्ट पे बाय कर रहे हो तो भाई सबको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर बायर से, तो वो क्या करेगा, फेक मूव करेगा बाय की तरफ, देन उसके बाद बहुत ह्यूज सेल जाएगा कंटिन्यूस फ्लो पे। ओके, क्योंकि बाय जाएगा सपोर्ट मतलब इट शुड फॉलो द सेलिंग। ओके, ओके, ग्रेट ब्रदर, ग्रेट, कीप योर एनालिसिस ऑल्सो सेम। और कौन सी करेंसी पर चले, बट अभी देखो तो मूवमेंटम ही नहीं है मार्केट पे। ये एक ही पोजीशन पे देखो तो भाई 2-3 मिनट तक है, जहाँ जब से मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब से मार्केट वहां पर ही बैठा है। नो वॉलेटिलिटी, नो मोमेंटम। क्या हो रहा है भाई, रुक जाओ। ओके, हाय हाय टू हबीब इमेचर, हबीब ब्रदर, हाउ आर यू, वेलकम टू स्ट्रीम। क्या चल रहा है, और मैं कौन सी ट्रेड वही सोच रहा हूँ मैं। भाई तुम देखोगे तो भाई 1 मिनट पे तुम देखो मार्केट को, ठीक है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे जा रहा है, गोल्ड आई मीन। देख सकते हो भाई ये क्या हो रहा है, भाई इतना एकोमोलेशन क्यों हो रहा है। जो जो ट्रेड लेगा भाई वो फंस जाएगा, ठीक है, जो जो ट्रेड करेगा वो फंस जाएगा ट्रेड पे। मैं तो नहीं करूँगा एंटर, ठीक है, मैं तो वेट करके एंटर करूँगा। ओके, 3370 से सेल, 3370, 60-70 यहाँ से देखो वहां तक तो भाई आना चाहिए मार्केट को, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। ओके, आने तो पहले। व्हाइट टाइगर ब्रदर, बढ़िया हो ब्रदर, आप बताओ आप कैसे हो, व्हाट डू यू थिंक। 3370, हाँ हाँ, 3370 नहीं तो भाई 3380। एक तो भाई 3370 नहीं तो 3380 से मैं सेल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है एंड 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, तो भाई वहां पर हम लोग जा सकते हैं सेल, ठीक है, पहले आना दो मार्केट को। ओके, व्हाइट टाइगर, 50-50 रिक्वेस्ट अमाउंट अकाउंट हैंडलिंग। देखो भाई ये डिपेंड करते हैं भाई आपका अकाउंट कितने साइज का है। बड़ा अकाउंट है तो भाई बड़े अमाउंट लगेगा, बड़े प्रॉफिट तुमको मिलेगा, बड़े प्रॉफिट से तुमको 50-50 देना पड़ेगा। छोटा अकाउंट है तो भाई लॉसेस भी कम रहेगा, प्रॉफिट भी कम आएगा, लॉसेस भी कम होगा, एंड आपका अकाउंट हैंडलिंग फीस भी कम पड़ेगा।
एंड ये सब तुमको जानने के लिए भाई तुमको टेलीग्राम ही ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड टेलीग्राम ओनली हेल्प करेगा आपको। ओके, क्योंकि देखो मेरे मेरे को इतना भी आइडिया नहीं है टेलीग्राम पे अकाउंट हैंडलिंग पे क्या क्या चार्जेस लेता है, एंड वीआईपी ग्रुप पे सिग्नल्स कितना क्या चार्जेस लेता है, कितना सिग्नल देगा और क्या है। मैं सिर्फ यूट्यूब पर आता हूँ, मैं यूट्यूब पर तुम लोग को एनालिसिस करके देता हूँ, मार्केट के ट्रेंड बताता हूँ, कहाँ से लेना सही रहेगा, कहाँ से लेना गलत रहेगा, एंड पेशेंस कैसे रहना चाहिए, एंड ये सब भाई आई जस्ट एक्सप्लेन यहाँ पर। एंड जो भी ट्रेड आया मैं लेता हूँ भाई, यहाँ पर देखोगे तो भाई ऑल दी ट्रेड मैंने एक्सप्लेन करके मैं लेता हूँ ट्रेड, ठीक है। हाँ, मैं बाद में लेता हूँ क्योंकि भाई मेरे को डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि भाई यहाँ से ये चीज़ होगा, फिर भी क्या होता है कि भाई यू नो दैट एक मेंबर के साथ रहोगे तो भाई वो बोलेगा दूसरा ओपिनियन, तो उस समय मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ एंड मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, अभी मैं लाइफ पे कुछ ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बट सेम देखोगे तो भाई मैं भी कुछ ट्रेड लेता हूँ रात पे शाम को, बट मैं एनालिसिस करके देने के बाद ही मैं लेता हूँ ट्रेड, एंड उसका सब रीज़न भी है प्रॉपरली क्यों लेता हूँ। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि भाई तुमको पता है कि भाई यू आर करेक्ट, देन ऑल्सो सम पर्सन सेज कि नो, डोंट डू दैट, तो भाई ओके, तब लगता है कि भाई हम गलत हैं एंड हम लोग मिस कर देते हैं, तो ऐसे हो जाता है। सो आई डू एनालिसिस, आई टेक अ ट्रेड। आप पर्सनली हैंडल कर सकते हो क्या? पर्सनली कर तो सकते हैं ब्रदर, ब्रदर कर तो सकते हैं, बट इसमें क्या होगा कि भाई मान लो पर्सनली करूँगा, आपका कुछ हो गया तो भाई तुम पर्सनली मेरे को नहीं बोलोगे, तुम कंपनी को बोलोगे कि भाई इस बंदे मेरे को पर्सनली हैंडल कर रहा था एंड इसने मैंने लॉस करवा दिया। सो इसमें क्या होगा भाई, मेरा बदनामी होगा, राइट। एंड ऑलरेडी मैं एक कंपनी पे हूँ तो आई कैन डू दैट पर्सनली, ठीक है। अब इफ एनीवन इज माय फ्रेंड तो भाई उसका मैं पर्सनली कर सकता हूँ, एज अ सब्सक्राइबर, एज अ ज्वाइन करते हो तुम टेलीग्राम पे, तो भाई मैं तो भाई पर्सनली करूँगा, तो भाई कुछ हो जाए तो भाई तुम मेरे को पर्सनली नहीं बोलोगे, यू विल टेल पर्सनली मी, फिर तुम बोलोगे कंपनी को भी कि भाई मैंने इस बंदे से पर्सनली किया था और मेरा लॉस हो गया, तो भाई इस पे मेरा नाम ही बदनाम होगा, राइट। तो मैं ऐसे पर्सनली नहीं करता हूँ, ठीक है, until he is my good friend। ओके ब्रो, आप दोनों का नाम तो बताओ, इट्स वेरी नाइस टू इंटरेक्ट विथ यू। देखो, गुड नेम इज गोपाल, ओके, जो मेरे को ऑफिस पे बोला था गोपाल, एंड वो जो रहता है उसका एक ही नाम है ओविरूप, ओके, ओविरूप चौधरी, एंड मेरे को भाई गोपाल बुलाता है, एंड यही मेरा गुड नेम है, ठीक है। गोपाल ब्रदर यूएसडी सी एच एफ। ओके, यूजुअली आई डोंट टेक ट्रेड इन यूएसडी सी एच एफ, बट फिर भी हम लोग देख लेंगे। ओके आप, ओके, हाउ टू ज्वाइन योर कंपनी। देखो ब्रदर, कोई छोड़ेगा तभी तुम ज्वाइन कर पाओगे। सो इफ समवन लीव दिस कंपनी देन ओनली यू कैन ज्वाइन ना। एंड आप ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, लाइक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। ऐसे नहीं कि भाई मैं गुड हार्ड वर्किंग हूँ, ऐसा मत बोलना, लाइक व्हाट इज योर लाइक रियली स्किल्ड, ठीक है। स्किल तो होना चाहिए कुछ, ठीक है। लाइव स्ट्रीम 30 सेकेंड्स डिले, यस ब्रदर, वी कांट डू एनीथिंग ब्रदर। आपको पता ही है लाइव स्ट्रीम 1-2 सेकंड डिले होता है, बट हम ऐसे नहीं करना चाहते, बट ऑटोमेटिक हो जाता है, ओके, ऑटोमेटिक हो जाता है ड्यू टू दी रूल्स, ओके। देखो, हाँ ये था, ये तब था ब्रदर, ये था पुल बैक। एंड पुल बैक का तुम्हारा ऐसे तो ये अभी मत करो, अभी बाई मत करो, ठीक है। बाई तो चला गया, यहाँ से सेल पे गिरने का भी चांसेस हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी बाय मत करो, इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तभी बाय करना, ठीक है। 0.282690, इफ इट ब्रेक देन गो फॉर द बाय। अभी ऑलरेडी बाय चला गया, वो क्या रहा है भाई, इसको इतना बार क्यों चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके ऊपर से बाय करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर देखो तो भाई सपोर्ट है, सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, इसीलिए। तो इसीलिए मैं बोलूंगा यहाँ से बाय मत करना। यहाँ से हम लोग का एक सेलिंग मिल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके वेट करके लेंगे। गिव मी अ मिनट, कैमरा ऑफ हो गया। बी पेशेंस ब्रदर, बी पेशेंस, हम सबका क्लियरिटी कर देंगे। ओके, 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 गॉट इट। हाउ मच मिनिमम अमाउंट? ब्रदर मेरे को पता नहीं ब्रदर, व्हाइट टाइगर, एक बार तुम टेलीग्राम पे जाकर पूछ सकते हो प्लीज, क्योंकि समटाइम्स दे टेक $300, समटाइम्स दे टेक $200, समटाइम्स दे टेक $500। अभी पता नहीं क्या रूल्स है, $1000 ले सकते हैं, $5000 ले सकता है। बट हाँ, मिनिमम तो मेरे को लग रहा है कि वो 200 से 300 हो सकता है, ठीक है। एक बार तुम उसको जाकर क्लियरिटी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं खुद करता नहीं हूँ, तो भाई मेरे को पता नहीं। मेरे को जो आता है भाई मैं वही मैनेज करता हूँ बस। ओके, सो मेरे को 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन ट्रेडिंग मिस्टर बनी। मतलब एक बात बता, जब आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई आप जॉब क्यों करना चाहते हो? मतलब ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जॉब। तुम देखो तो भाई मैं सुबह से शाम तक बैठ कर तुमको एनालिसिस कर रहा हूँ, इसके लिए आई गेट सब मनी। ओके, तो ये भी देखोगे तो भाई इस टाइप ऑफ जॉब हो सकता है, राइट। 1 ईयर से प्रॉफिटेबल हूँ, बट मोर लर्निंग करने के लिए आपके साथ रहे क्या? अच्छा, इसके लिए भाई देखो, आई कैन अंडरस्टैंड ब्रदर बनी, कंपनी तो मेरी नहीं है ब्रदर, क्या करूँ? मैं बोलूँगा आपको भाई आ जाओ, लेकिन कंपनी मेंबर बोलेगा, जो मैनेजर है, सीईओ है, वो तो सपोर्ट नहीं करेगा ना, राइट। दे वोंट सपोर्ट, कि भाई ऑलरेडी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और तुम क्यों चाहते हो यहाँ पर काम करना, ठीक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स ग्रेट ब्रदर, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो अभी के लिए मिस्टर बनी भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो भाई बहुत ही बढ़िया ब्रदर, इफ यू आस्क मी, ठीक है। रियली लाइक ब्रदर, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो आपको हेल्प करूँ, लेकिन मैं खुद ही एक एम्प्लॉय हूँ। एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय पे कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये ब्रदर, आई नो ब्रदर, आपको सैलरी नहीं चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप खुद ही ट्रेडिंग करते हो, खुद ट्रेडिंग पे पैसे कमाता हो, आई नो ब्रदर। लेकिन आप मेरे पोजीशन पे रहकर अंडरस्टैंड करो कि भाई मैं एक ही एम्प्लॉय हूँ, तो भाई आई कैंट से मच मोर। आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम पर और पूछना पड़ेगा कि भाई इज दर एनी वैकेंसी, लाइक आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए कि नहीं, इसी तरह आप उसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि भाई टेलीग्राम पे सब होता है, ठीक है। टेलीग्राम पे सब होता है, जैसे अकाउंट मैनेजमेंट, सिग्नल्स, सॉफ्टवेयर चाहिए कि नहीं, डिजिटल मार्केटर चाहिए कि नहीं, कंटेंट चाहिए कि नहीं, वीडियो एडिटर चाहिए कि नहीं, थंबनेल्स बनाने के लिए चाहिए कि नहीं, ये सब टेलीग्राम मेंबर्स कांटेक्ट करते हैं हमारे सीईओ को, हमारे मैनेजर को। तब हम लोग को कुछ चाहिए तो भाई हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली उसको बता देते हैं, ठीक है। तो आई कंसर्न दैट ब्रदर, आई आस्क, ओके, मैं भी पूछ कर देखूंगा, ठीक है। ओके, आप चाहते हो कि लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर इसमें बनाने के लिए मैं एक सजेशन करूंगा ब्रदर, जब तुम चाहते हो इसी तरह, आप खुद के ऊपर कुछ डिपेंड करके ही करना पड़ेगा ब्रदर। ओके, आई टेल यू ब्रदर, आई टेल यू द बीटीसी। ओके, आपको ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आता है। पर देखो, मैं अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई मान लो कोई कौन रिकॉर्डिंग करके उसको भाई क्लिप उठाकर भाई कुछ भी बोल देगा, ठीक है। आई डोंट वांट टू बी इन दैट, ओके। बात सही है भाई, मजा आता है भाई जॉब करने पे, ट्रेडिंग करने पे, आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन समटाइम्स जितना तुम एक्सपेक्ट करे भाई, उतना एक्सपेक्टेशन ऑपोजिट भी होता है, ठीक है। तो आई कैन शेयर मच मोर,
पर्सनली होंगे तो भाई पर्सनली हम लोग बता सकते हैं, नहीं तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल ना। ओके, बहुत बढ़िया ब्रदर। देखो मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ भी कोई ट्रेड करे, मेरे को भी कुछ बताए, आइडिया दे। आई ऑल्सो लाइक दैट। बट हम लोग करेंगे, ठीक है ब्रदर, पर्सनली कई बार हम लोग मिले तो भाई वी विल डू दैट। ओके। ओके, आपने रिकवर भी कर लिया, बहुत बढ़िया ब्रदर। देखो ब्रदर, मैं बोलूँगा कि भाई जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, जब मेरे पास पैसे आ रहा है प्रॉफिट करके तो मैं क्यों जॉब करूँ, वो उसका माइंडसेट रहता है राइट। तो आप भी तो ऐसे माइंडसेट कर सकते हो ना कि भाई मैं तो ऑलरेडी खुद ही ट्रेड कर रहा हूँ, मैं खुद ही प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो मेरे को क्यों जॉब करना चाहिए। एंड आपको पता ही है, इफ़ यू डू एनी जॉब भाई आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, एंड वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि इफ यू डू एनी जॉब यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। एज अ ट्रेडर भाई तुम नहीं चाहते कि भाई मैं क्यों फॉलो करूँ, मेरे को तो भाई आंधा पैसा आ रहा है भाई, एक ट्रेड लूँ भाई, बाय करूँ या सेल करूँ, दिन में 9 घंटे पे एक ट्रेड भी लोगे तो भाई तुमको 100 पिप्स भी मिले तो भाई 850 से 900 रुपये मिल जाएगा एक 0.01 पे। तो भाई कोई नहीं चाहेगा कि भाई इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, नो वन इज एक्सपेक्ट कि भाई मैं जॉब करूँ, ठीक है। ओके, आई विल लेट यू हैंडल माय अकाउंट, but if you withdraw the money, bro, try to understand your account means only you have a access to withdraw your account। ओके, क्योंकि आपका अकाउंट पे you only put your login id, your email id, your registration, after your passbook, your what you call TSC20 account to withdraw, so we have nothing. You just give your account id and password, we can't withdraw your money। Okay brother, एंड टू बी honest आई won't handle your account, पहले बता देता हूँ, आई won't handle your account because we have a team members, because whenever if you might get a loss or if you make a profit, I don't want to hear कि भाई you made a loss or you made a profit। Okay, so if you want to manage you have to contact our telegram, if you want VIP you have to contact our telegram, but how you can contact, I can share you the link, okay, I can share you the admin link, I mean like contact link, you can contact them. If you're satisfied then give your account, then join our VIP group, so anyone those who are watching commonly, because I don't want to hear brother मेरा लॉस हो गया भाई, मेरा अकाउंट ये हो गया, तो भाई मैं क्यों सुनूं भाई, यही चीज़ है। जब देख रहे हो कि भाई लॉस हो रहा है भाई, आपका सिर्फ लॉस नहीं होता भाई, हमारा भी लॉस होता है, तो उस पर कोई सोचता नहीं है भाई मेरा लॉस हो गया, सो दैट वे दे थिंक। तो together no one can withdraw, okay, yeah, so hi Ichigo Kurosaki, भाई Ichigo what's your full name, is it Kurosaki? ओके, बीटीसी अभी थोड़ी बहुत मार्केट को पुल बैक कर ले तो उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई बाय के लिए, ऑलरेडी मेरा बाय है। ओके, इरफा ब्रदर, बाय और सेल, लेट मी नो ब्रदर। या यही मैं बोलना चाहता हूँ, यही मैं भी बोलना चाहता हूँ भाई, सो ट्राई बाय योर। मैं चाहता नहीं कि भाई किसी के हैंडल करूँ भाई लॉस हो जाएगा भाई मेरे को गाली मारे, ओके, बट आप खुद के पास टाइम नहीं तो भाई यू डू। एंड इस पे मैंने कोई किसी को नहीं बोला कि यू मस्ट गिव अस,
ओके, मैं पहले बता रहा हूँ। एंड मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम। आपको चाहिए सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ज्वाइन कर सकते हो सुपर वीआईपी में। और यू कैन बी, आई विल टेल यू। ओके भाई, रात को ट्रेड लेते हो क्या? रात में नहीं लेते भाई, जो मैं लेता हूँ भाई 6:30 to 7 o'clock के अंदर ही मैं ट्रेड लेकर चला जाता हूँ। रात में मैं ट्रेड नहीं करता। एंड ये भी जो भी ट्रेड मैं देता हूँ भाई, सब मैं तुम लोग को बता देता हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रीम को क्लोज करता हूँ, उसके बाद ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। जो जो मैं बताता हूँ कि भाई गो फॉर दी बाय, गो फॉर दी सेल, दिस इज योर एसएल, दिस इज योर टीपी, मैं भी उतना ही रखता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, स्ट्रीम को क्लोज करने के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई दूसरा दूसरे का ओपिनियन आ जाए और वो बोलेगा भाई मैं कहाँ तक टीपी रखूँ, कहाँ तक एसएल रखूँ, कहाँ पर टारगेट है। सो आई डोंट। ओके ओके, आई एम फ्रॉम Kerala. So your name is Mohan, right? Something told me. Say something in Malayali, brother. Long time I didn't hear some Malayali word. Something like what do you? No, 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 no. I just confused. सर सच बताओ, ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है क्या? टाइम लगता है ब्रदर प्रॉफिट करने में। एज अ बिगिनर तो भाई बहुत लॉस हो जाता है, बहुत। एज अ बिगिनर यू विल लूज मच मोर कैपिटल। सर गोल्ड में आपने ट्रेड नहीं दिया भाई, मैंने सुबह दिया था, मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, वो अलग बात है, बट मैंने बताया था कि भाई सेल पे जा। एंड अभी तुम देखोगे तो भाई यहाँ पर क्या गोल्ड ट्रेड करोगे, व्हाट विल टेक अ ट्रेड? या से समथिंग इन Malayali brother then. So you see this, what do you expect? Now let me know, what do you expect? You gonna go for buy or gonna sell? Say something in Malayali brother, write down in English and tell it. Okay सर, गोल्ड का क्या व्यू प्लीज? ओके केदार, तुम बताओ यहाँ पर मैं क्या ट्रेड करूँ इस पे? एज अ accumulation market, what should I take a trade? ओके अंजुम, आप भी बताओ एज अ accumulation मार्केट पे कौन सी ट्रेड लेना सही रहेगा यहाँ पर? Not only from here, you can see 5, 10, 15, 20, 25, 25, 20, okay, like more than 1 hour to 2 hours, 1 से 2 घंटे मार्केट पूरा साइडवेज पे चल रहा है, तो भाई इसमें मेरे को ओके, इट्स अ फुल ऑफ साइडवेज मार्केट, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि भाई बाई पे जाएंगे या सुगामानो। या आई ब्रदर, डोंट ट्रांसलेट, ओके सुगामानो मींस लाइक आई नो दैट, like how are you, then after I forgot some okay word, I forgot, say something brother in Malayali, I will try to guess, okay? Because I learned, I forgot. Oh, I'll try to take a buy from 3350. Okay, 3350 के ऊपर से मैं buy करूंगा. Why I will go for a buy from that? You can see some like change of character here, or you can say change of character, breakup structure. It will make a breakup structure here. So 3350 के ऊपर, okay, I'll go for it. सर सेल साइड वेज में है तो पर प्रेशर सेल का है। हाँ, 3350 पे तुम एसएल रखकर you can go for the, bro, I know that brother. So Manu, that means like how are you? Other things, brother. Say something else. ट्रेडिंग में मैंने 13 to 17 लॉस लॉस किया था लास्ट 3 साल में, एंड एक ईयर में काइंडली रिकवरी ऑल लॉस। ओके, या इट टेक्स अ टाइम ब्रो, ऑब्वियसली। इवन आई आल्सो, when I started I don't have that much capital, I started with like $30, $50, and एक ही ट्रेड में भाई $30 gone. What is that brother? Panam poi power Virat. Panam poi, Panam poi means like, it's like money, like क्या बोलते हैं भाई, पनम पोई मीन्स लाइक lying, right? Money lie, something like, panam means money, poi means like lying, right? Virat means I don't know what is that.
What is that meaning, brother? Panam poi virat or virat. So it's a sideways. Okay. Okay. GBP USD, right? Let me check. A GBP GBP USD. Okay. If you are lucky, brother, no comment. Okay. Yeah, I know that some word only. Okay. Pana means like money and the what do you call? Poi means lie, right? No, poi means it goes. Yeah, poi means goes or lie. That is two meaning. सर आजकल न्यूज़ के बारे में कुछ बताओ आपको क्या लगता है कौन सी न्यूज़ ब्रदर कौन सी न्यूज़ पूछ रहे हो बहुत सारे न्यूज़ चल रहा है सो मेनी न्यूज़ आर गोइंग ऑन सो मेनी न्यूज़ आर गोइंग ऑन व्हाट न्यूज़ आर यू एक्सपेक्टिंग ब्रदर विरत विरत मीन्स कम ओके ओके पोई मीन्स गोस ओके विरत विरत ओके पोई मीन विरत पोई ओके दैट्स Malayalam got it anything else brother teach me brother I forgot Malayalam I had a good friend in Malayalam who used to taught me many things then after I forgot okay 6 p.m. USD news let me check brother is there any news around चले जाते हैं भाई यहाँ पर पोई मीन्स गो that is in Tamil brother oh that is in okay poi means in Malayalam yeah but if you say in Tamil poi that means you're lying so I just got confusing Malayalam and Tamil 6 o'clock any news no okay we have an unemployment claim and I don't think okay कल नाइट में आना था आपको न्यूज़ में रात पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ब्रदर बट क्योंकि मैंने सुबह ट्रेड करके प्रॉफिट कमा लेती सो आई डोंट टेक ब्रो ऊपर ब्रेकर ब्लॉक हुआ है आई मकाऊ हाई हाई टू वाइव ऊपर ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक है क्या किस पे ब्रदर किस पे पूछ रहे हो करेंसी का नंबर भी मेंशन करो डू मेंशन करेंसी नेम आल्सो या if you are native Tamil I got it brother okay great Zedi great and whenever I get bored teach me something okay okay so which currency are you saying brother is breaker block are you saying this currency or gold I gold I just lost today also इस अकाउंट पे मैंने कोई अकाउंट पे मैंने पंच नहीं किया मैंने पर्सनल पे लिया था एंड मैंने उस पे लॉस कर दिया था मैंने बाय लिया था उस पे 60 से एंड उसमें मेरा लॉस हुआ था पर्सनल पे अच्छा ओके ब्रो टेल मी टेक ट्रेड जीबीपी I just given you the SL and TP. You, what is your point of view? You tell me, Irfa. What do you think?
Now, before I say anything, you also make your mindset clear. Should I go for the buy or should I go for the sell? You should also make a mindset clear. Why I'm telling you for the buy? Because I can see the order block. So that is the reason I'm telling you buy. If my setup fail, that means I am in a loss. So don't want to blame myself. You also think that what is the reason you gonna enter. Okay. So any trade you want to enter, think the reason why you gonna enter. I told my reason due to the order block, and I can see it's a good order block if you ask me to be honest. And I can see some liquidity also. So थोड़ी बहुत market नीचे आ सकता है. So market can come little bit of downside. But my point of view, like we can go as a buy sell and we can make it profit. Okay, in a GBP USD. And same as in Euro USD. Let's see if GBP USD goes buy side, we can get USD also. USD भाई move ही नहीं कर रहा है भाई, वहाँ पर ही बैठे हैं. Actually, I'm looking at 4 hours time frame, so that is the making time. And you can see the market. Wow. Okay. If it break this high, you're gonna get a good buy move. If you haven't entered, try mark some zone and enter. Because I don't want to get blame myself. You see the market, you do the analysis also. If you have any analysis doubt, I can help you. But don't expect. Okay. BTC, tell me. BTC, 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 BTC. Let it fall up to here. Now BTC need to actually, if it fall here, you'll try to go for the buy from this area. Okay. I can see like 5 minute also, it's 15 minute gonna be. It's sideways पे है. You'll try to take trade. Okay. Give me a minute. Okay, I'll just go and come. Okay, for a few minutes. So this is the gold chart, and if you see the gold full sideways, what we can do? We have to wait for gold to break any high or a low. So if you break this high, 50, okay, this, okay, 50, 49 to 50, then we will go for the buy side. Or if you try to break this support area, which is 38, we can try to go for the sell up to this area. And due to the sideways area, no trade in a gold right now until it break the zone. Okay, clear? I hope. Okay, Bharat Das, welcome, brother. So I'll go for a minute. So be with us. You can take a trade. If you break this area, try to enter with very low risk. And if you take 50, go for the buy.
Bro, just give me some break now, bro. Well, I can go for the break. Okay, BDC, what happened? Tell me, bro. Bro, I told you clearly, man. From morning to I've been here. Right now, gold, I mean BTC, you can see it's a 5 minute time, it's also same in a sideways, 15 minutes. No momentum. One thing you can do, wait for this area pullback, 99.3. If you do like that pullback up to here, then go for the buy from this area, 99.3 to 4 area. Or if you break this high, try to go for the buy, not now, break this, go for the buy up to here. Small. So everything you have to calculate your risk, then take a trade. Okay. Wait for pullback, then go for the buy, or if you wait for this resistance type break, go for the buy. Thank you guys. Wait करो भाई फिर
Hi H2O, welcome to our stream. So actually, if you see the gold right now, it's in a sideways. So that is the reason I haven't taken any trade in a gold. I have to wait patiently, then take a trade in gold. And let me see in other currency. Okay, hi. Tell me what market says this. In a 1 minute time frame, you can see here is the order block and you can see the high. So most probability market is falling this area, right? And if you have a balance to hold up to 45, then you can go for the sell. I can see one order block. I can see one more high is here. So if I go for the sell, I would like to go for sell and my ASL will be 45. Okay, so short like that. I want to keep my ASL and TP. Okay, so I'll enter now like that and I will keep my TP. So if you think sell, then enter. Others don't enter. One block order block and you can see the high. So it's like 45 pips. I mean not 45, 50 pips. Okay. So 50 pips of sale side possibilities are there due to the order block I'm saying. Or if it order block break, then market can go up to this high, grab some liquidity, then it can come downside. Okay. So if you are interested, you can enter. Other just leave it now. I can see only sideways market. I told you take this as a support and take this as a resistance. You can take this as a resistance or you can take this as a resistance. And market hasn't break anything, so it's going in a sideways right now. Okay, market is going in a sideways. Let's see what happens.
If you're really interested, you can try taking a trade in the sell side. Otherwise, you just wait. Okay, hi. What's your name, brother? Ali, Ali. Or you can keep up maximum of this here, 50. Maximum 50. Okay, I'm not telling you to enter in a buy or not in the sell, but I'm just giving you the examples. Okay, like explanation. Here is the order block. It tap the market. So if it break this order block from 41 and 42, then market can go downside. So like that it will happen. This can happen like that directly.
Yeah, if it breaks this OB, then come out. Okay, I can see the sideways market. I just tried to thought that it will obey this order block, but it didn't. So come out. It's like going sideways, bhai. Full market sideways today. Try to take a trade right now. I'll take a trade in the US season. What is happening in the market? But it will go down. If you have a capacity to hold your market, then it's fine. Otherwise, just leave it and come out. See here. Full sideways market. Market always changing his plan. Like breaking this high, going upside. Okay, breaking this high, going upside. It's breaking this high, going upside. Now it will target this high, which is 50. Okay. Now it will target this high. So it's going up, down, sideways market. It's in a 45 now, right? 45, 46. It will go 40 pips. Like 50 it will touch. अभी बाहर आ जाओ ब्रदर और भी ऊपर जाएगा राजकुमार पाटिल मार्केट ऊपर जाएगा गोल्ड ब्रेक दी ऑर्डर ब्लॉक सो चांसेस आर दैट कि भाई बाय की तरफ ओके इस पोजीशन में ट्रेड मत करो भाई अभी ट्रेड क्यों ले रहे हो आई कैन सी कि भाई देखो इसके ऊपर ब्रेक कर दिया मार्केट पुल बैक दे रहा है ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है इसलिए बोल रहा हूँ देखो ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने पुल बैक भी दे चुका है चांसेस आर दैट टू गो फॉर द बाय साइड like you can keep your SL 42 and target 49 like that. Okay, ये टुडे लॉस चल रहा है बाहर आ जाओ ब्रदर अभी बाई की तरफ जाएगा 42 पर एसएल एंड 49 तक टारगेट 49 50 तक जा सकते हो टारगेट यूनिवर्सिटी जस्ट एंटर्ड ओके ऑल साइड स्लो मार्केट सेल देते हैं सेल कर दिया बाहर आने की ट्राई करो ब्रदर अभी बाहर आने की ट्राई करते हो ओके सो बीटीसी गॉन बाय बीटीसी आई बीन टेलिंग यू इट्स अ बाय मार्केट what did I say when it break this high go for the buy or from this area जीबी विस्ट गया और धीरे धीरे करके जा रहा है ब्रदर ओके कम आउट फ्रॉम द सेल गो फॉर द बाय इन अ गोल्ड ओके आई कैन सी इट ब्रेक दिस हाई मेड अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड ऑल एंड इसके नीचे 43 पर एसएल रखकर तुम जा सकते हो 20 पिप्स का एसएल 25 पिप्स का सो ट्राई टू टेक रिगार्डिंग योर इक्विटी स्लो एंड प्रोसेस पे करो ट्रेड
यहाँ पर ऐसे रखो या यहाँ पर टारगेट रखो. सो इफ यू थिंक इट्स करेक्ट देन एंटर, क्योंकि भाई यहाँ से एंटर करना चाहिए था. हमारे एंट्री लेट हो गया. सो व्हाट यू थिंक, इज इट करेक्ट और व्हाट? बाहर आने के बाद अभी चेंज कर ट्रेड लो ऑपोजिट. We have to change our plan regarding the structure. If market gives a selling structure, so that is the reason I plan for selling. But I can see it break this high, so I'm planning for buy. So you have to change the structure, brother. We can't do anything. It's a very bad market. If you think it's a not good, then you can come out in 42. Okay, you'll get a buy. Okay, Euro USD target. Serious about buy? I'm not serious anything, brother. Market is giving buy and sell. You have to take a trade regarding the support, resistance, order block, and rejection breakup structure. So that way, I thought you will go sell regarding the order block. But bro, I'm nothing serious, brother. In gold, do you think it will work? Then you can go. Everything is depend on your risk, brother. How much you want to take a trade for a risk. So that is depends. If you enter in a trade, I would say you can keep your SL in 43. That means only 20 pips, 45 to 43, 20 to 25 pips. Okay, so that way you can regarding your losses and your trade. Okay, यही तो भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है ब्रदर. आपको लॉस को कम करके ट्रेड करना पड़ेगा. आई कांट से कि भाई ये भी तुमको लॉस नहीं देगा, क्योंकि भाई मार्केट पे तुम क्या समझ रहे हो भाई. देखो जो भी एनालिस करे भाई, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए मैंने बोला कि भाई यहाँ से सेल जा सकता है, लेकिन क्या किया भाई, इसको ब्रेक कर दिया, इस हाई को भी ब्रेक कर दिया. नाउ दैट इज नथिंग हियर. यहाँ पर कुछ है कि भाई मार्केट को सेल जाने के लिए, जैसे कोई लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. यहाँ पर देखो ये वाला ब्रेक कर दिया. अभी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई 80% का चांस बाई की तरफ ही, क्योंकि ये था एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, राइट. तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है, then we have a chances for market to go buy side. You can see this, it's a like a resistance. Okay, it's it's like a resistance here. Just okay. It's like a resistance here. So already market did a break, did a pullback. Now probability of chance क्या है कि भाई ये वाला हाई था, एंड ये भी लॉस हो गया, तो भाई ये भी लॉस पे हो गई भाई. 42 तक रख दो भाई. मतलब मार्केट पे बायर सेलर को दोनों ही ट्रैप करे भाई. क्या करे भाई, पता नहीं चल रहा. मार्केट ने क्या करे आज, जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो उस डायरेक्शन में लॉस करवा रहे हैं. दोस्त ऑफ एंटर इन अ सेल फॉर देम विद मेड अ लॉस फॉर बाय. अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट ने पुल बैक भी दे दिया. इफ आई एंटर नाउ आल्सो इट मेकिंग अ लॉस. हो जाएगा अकाउंट ही जीरो हो जाएगा आपके चक्कर में. क्या ही करे ब्रदर. थोड़ी आप भी देख लो. नहीं बोल रहा हूँ, रीजन तुमको दे रहा हूँ, इसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई बाई है या सेल है. रीजन को तुम देखो, तुमको रीजन वैलिड नहीं लगे तो भाई तुम क्यों एंटर करोगे, राइट. रीजन तुमको वैलिड लग रहा है कि भाई हाँ भाई वैलिड है, देन एंटर इन अ ट्रेड. अब अकाउंट ही जीरो हो गया. कैसे ब्रदर कैसे? 20 पिप्स भी तुम्हारे पास एसएल नहीं रख पाते हो तो भाई मैं क्या ही बोलूँ. चलो 20 पिप्स ही एसएल नहीं रख सकते. Hi Ichigo, then after we have a
Warden Henry. Hello, brother. Avenue here. Thank you for joining with us. Actually, if you see the market is like probability making a sideways market fully. It did a consolidation here. Whenever I thought to take a sale from this area. Look at this. Okay, that was the order block. I got a little bit of sale. Then again, it market is upside. Then after I can see the market in a breakup structure, it doing a pullback. So pullback, if I enter in a buy, 20 pips of resale. This candle below. So 42 अभी तक hit नहीं हुआ. ठीक है. Use your brain now, brother. Use your brain. So whatever trade I have given you properly with a proper analysis. Just telling you that is the order block, go for the buy. That is the okay pullback and retrace, go for the buy. So except that we can't do anything, no? Hi, Ichigo. Yeah, they want to say something, just say. Hey, यहाँ पर तुम लोग को मैं बता रहा हूँ भाई ट्रेंड फुल साइडवेज पे चल रहा है मार्केट एंड एवरी जोन पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भाई आई एम टेलिंग यू कॉज आई सॉ द ऑर्डर ब्लॉक हियर सो इसलिए यहाँ पर देखो एक सेलिंग कैंडल भी क्लोज हुआ था इसलिए मैंने बोला फिर इस पे देखोगे तो भाई मैंने यहाँ पर भी तुमको बोला कि भाई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया कम आउट फ्रॉम द मार्केट सो आई कैन सी हियर आल्सो इट डिड अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड डिड अ पुल बैक तो इसलिए मैंने बोला ऐसा हो जाता है भाई without any reason I am not saying you to go for the buy not for the sell ना and every trade I told you it's a 20 pips of ASL. Okay, that was the USD JPY. That is the same way. I told you if high break, go for the buy, and it's a 1 hour time frame. If we see in a small time frame, উপরে গেছে ওইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানে Hmm. So you can see that it break this high, did the pullback, it got upside. Okay, so like that only I just told you. এসে গরম এসে মাথা ব্যথা Okay, अरे एरो खोले तो लग गई. ओके सो राजकुमार पाटिल ब्रदर पहले तो रिस्क मैनेजमेंट को सीख कर उसके बाद ट्रेड करो ठीक है ये राकेश ना पूरे जावे আর পিছিয়ে আসো পিছিয়ে আরো যেগুলো আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন আমরা মাউস কি এরবার ইউজ করবো এবার দেখো এবার এবার ইয়ে করতে হবে বুঝে বুঝে করতে হবে ओके एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो मतलब 20 पिप्स को मैंने बोला था यहाँ पे भी मैंने बोला था वैल्यू एंटर इन गोल 20 पिप्स कीप इट एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल तो छोटा छोटा एसएल भी तुम्हारे पास बड़ा लगता है तो भाई रिस्क मैनेजमेंट पहले सीखो उसके बाद ट्रेड करो और क्या बोलूँ मैं
भाई कौन से ट्रेड लेना सही रहेगा इस पोजीशन पे, टेल मी गाइस, कौन से ट्रेड लेना यहाँ से सही रहेगा? यूएसडी जेपीआई पे $5,000 में 0.20 से है। यूएसडी जेपीआई आई गिवन यू ट्रेड मॉर्निंग, okay, so same as this type only I have given trade, like the way gold I told you breaker structure like did pullback done, it gone little bit of upside, like up to it gone up to this, okay. So like that I told in USD JP JPY, in USD JPY, what in a 1 minute, like 1 hour if you see, I just told that if it break this high, market do the pullback, then it will go upside. So it hasn't done that. It's straightly gone upside. So if you're in a buy, are you still holding your trade? Because market gonna come up to 144.472 again. If you're in a buy, market gonna come up to this area again, pullback area in AST JPY. BTC তে সেল দেখে বলছি ব্রাদার। देखकर बताता हूँ मैं बीटीसी पर সেল যাবে কি না। সো বিটিসি এটা चांस तो है सेल जाने का। आजकल मार्केट पूरा देखो भाई, इतना साइडवेज जाने के बाद सडन एक मूव, उसके बाद इतना गिरा है, साइडवेज मार्केट। आपको क्या लगता है? ये तो भाई पूरा साइडवेज ही है। समझे तो नहीं। ओके, तुम्हारा दो ट्रेड पे कैपिटल चला गया था भाई, तुम ट्रेडिंग मत करो, पहले तुम रिस्क मैनेजमेंट सीखो उसके बाद ट्रेडिंग करो। दो ट्रेड पे मैंने 20 पिप्स के ऊपर नहीं था। एक तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तुमको बाहर आने के लिए बोला, उस पर पता नहीं भाई तुम्हारा $40 कैसे उड़ गया। एंड इसके बाद मैंने $20 के बताया था, 45 से भाई 42 और 43 बोला मैंने, 20 से 25 पिप्स। 20 पिप्स के चक्कर पे भाई तुम्हारा कैपिटल उड़ जाए, पहले रिस्क मैनेजमेंट पहले सीखो। पहले $20 पे आपका लॉसेस क्या था भाई, आप क्या कौन सी ट्रेडिंग करते हो भाई? कैपिटल क्या है एंड लॉसेस क्या लेते हो तुम, ये बताओ। एंड ऐसे कि नहीं कि भाई मेरा 100 पिप्स तक चला गया भाई, मेरा अकाउंट वॉश हो गया भाई। थोड़ी बहुत भाई रिस्क मैनेजमेंट कुछ चीज होता है, ठीक है, वो पहले सीखो उसके बाद ट्रेड करो। 20 पिप्स की भाई तुम्हारे पास ऐसा रखने का कैपिटल नहीं है यार, तुम वो आ रहे हो भाई ट्रेड करने। और बताओ।
बीटीसी वेट करो भाई, बीटीसी वेट करो। मैं, मेरे को जितना लग रहा है कि भाई यहाँ तक तो भाई आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, रुक जाओ, सेल के लिए तो आना चाहिए। कट कर दिया भाई तुमने, कारण आहार। 3343 होल्ड करो, 3343 से आपका बाई है, 3343 से। साइडवेज मार्केट पे तुम बाई कर रहे हो ब्रदर। होल्ड है तो भाई तुम यहाँ पर ही कट करके बाहर आ जाओ 40 के नीचे। नहीं तो भाई ये वाला जो जोन है ना, मैं तो भाई अभी ट्रेड ही नहीं करता भाई, अभी साइडवेज मार्केट में मैं क्यों ट्रेड करूँ। मतलब 60 पिप्स तक तो भाई और भी नीचे आने का चांसेस है भाई। मार्केट कुछ भी कर रहा है भाई, एक तो भाई सेलर्स को इन्वर्ट कर रहा है, बायर्स को इन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट जा रहा है। ये देखिए, ये क्या मार्केट है, इस पे इसे क्या ट्रेड करोगे। मार्केट फुल्ली डूइंग a consolidation in this area, fully doing a consolidation। वही हो रहा है भाई, ताला मिलाने हो रहा है। That is happening now, like without any reason buy, without any reason it's a sale। मतलब आप लोग को रिस्क के लिए मैं कम कुछ करता हूँ तो भाई मैं गलत हो जाता हूँ। गोल्ड में कोई ट्रेड ही नहीं है। यहाँ से सेल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सेल आ रहा है, यहाँ से 50 पिप्स तक आया था, टारगेट मैंने यहाँ तक बोला था वो भी नहीं आया, उसके पहले ऊपर चला गया। यहाँ से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, सेल पे 20 पिप्स आया था, उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। सो इट्स रियली मेकिंग लाइक Thursday today. Why it's doing today? It should do Friday. Actually Friday only it makes a more fake out, क्योंकि भाई सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। सो व्हाट इट हैपेंस, दे डू मोर फेक आउट। भाई ले सकते हैं भाई, बाई सेल तुम्हारे पास मार्केट पे पैसे नहीं रहेगा ब्रदर। आप बाई सेल करते रहोगे भाई, आपका पैसे उड़ जाएगा। इस पोजीशन पे जो भी एनालिस्ट करो भाई, उसका थोड़ी बहुत देखोगे तो भाई ऑपोजिट ऑपोजिट चल रहा है। बाय करोगे तो भाई तुम ये सेल कहाँ रखोगे, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक तुमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अरे यहाँ से मार्केट देखो तो भाई एक सपोर्ट है। मतलब करना क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मार्केट का भी। गोल्ड इज डाउन। Gold is down, but if I hold in a sell side
first it will hit my SL, then it will go downside. So this is what market do. Or if I take a buy, okay, if I buy, then I will be lost in that area also. भाई दोनों साइड पे चल रहा है मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, बिग न्यूज, GBP big news in update bro. GBP, let's see GBP USD first. GBP USD. So this is the GBP USD. Let's check first. Then I will give you the update. So यही है GBP USD. Okay. So GBP USD right now 432, right? For my side, I will go for buy, but my mind says there is a possibilities sell की तरफ, sell side. Heart says go follow your strategy, but mind says go for the sell side. But I won't go sell. I will go for the buy only. Why? Full day I can see market is going bearish. Now I will take a buy to the opposite trend in a news. And ACL is there, TP is there. Then what? आज न्यूज टाइम पे कुछ होगा सर? नहीं ब्रदर. यूएसटी जेपीआई पे, आई मीन यूएसटी जेपीआई क्या बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आजकल. ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एफओएमसी एंड सीपीआई वाईवाई पे. ठीक है. इसके बाद जो भी रेड है, येलो है, ऑरेंज है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. वही दो मेजर करेंसी है, आई मीन करेंसी क्या बोल रहा हूँ, दो मेजर था. हाँ भाई, 0.01 पे मस्त बाई था, $10 बना देता. GBP are cutting rate from 4.5 to 4.25. Okay, you're gonna wait for better next 10 minutes. Yeah, that is also true. Look, simple strategy, order block, breakup structure, pullback. I tell you. I told you order block is that try. If you make it, others no ASL, 30 pips of ASL, and you can see it's going now. But the 30 pips. Okay, it already got 30 pips. Like 1:1, it already got. Lucas Roy, bro, you get the bro. Buy. All day market fall. News time, market buy. Okay. अरे पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है. पूरा स्क्रीन क्यों देखना चाहते हो ब्रदर? पूरा स्क्रीन देखकर क्या करोगे ब्रदर? ये जो जोन है, ये जो एनालिसिस है, दिस एरिया, पूरा स्क्रीन क्यों देखना चाहते हो? यहाँ तक भाई तुमको तो देख पा रहे हो कहाँ पर बाई है, कहाँ पर सेल है, क्यों बाई है, क्यों सेल है. यू कैन सी दैट ना. पूरा स्क्रीन क्यों देखना है? देखो 80% तुमको कवर हो रहा है, यहाँ तक कवर हो रहा है 80%. यहाँ तक नहीं, यहाँ तक. सो अप टू दिस पेंसिल मार्क यू आर गेटिंग कवर. सो यही है 80%. 80% जो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, तुम देख सकते हो. इस ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने ट्रेड लिया था. एंड ये जो देख सकते हो, ये वाला, ये है एक सपोर्ट. सो यू कैन सी द रीजन ऑफ बाय एंड यू कैन सी द रीजन अप टू टीपी. then why you need that much, right? यूएसटी जेपीवाई का क्या व्यू? यूएसटी जेपीवाई, my view was buy side. Okay, before I told you USD JPY was a buy, Vijay Rao, and you can see that I given you that this is the high. If high break, go for the buy. Okay, and you can see that it break the high, did a pullback, and it's going upside. For my opinion, I would go for the buy, but not in this area because it's in a center. So you have a 50% of market to fall up to this area as a pullback. You have a 50% chance to fulfill the target, which is here. Already 90% target is done. Okay. So
I won't say right now in USD JPY any trade because it's already like 50% is done. Okay, so if market comes here, so that we can decide whether if it come here or whether market is here, we will decide. Not in center area. Okay, I have 50 pips in gold. I'm in short. So you're in a short in gold. I'm just confused. Whenever I try to take a sale, okay. Whenever I try to take a sale, it goes buy. Whenever I try to take a buy, it goes sell. I won't take trade in gold today. Today, so buy. I won't take a trade in gold. It's a little bit of confusing. Like whenever I try to enter in a sale, it goes buy side. Whenever I try to go for the buy, it goes sell side. Like he's not ready to give us any profit. He's trying to manipulate the buyers and sellers. Then he goes in his direction. Ethereum break 1900. So you can see that it's like inviting the buyers and sellers. गोल्ड बाय ले सकते हैं बाय लोगे तो भाई तुमको अरे ये सर यहाँ तक बढ़ जाएगा 38 which is like already 40 pips of ACL and target तुमको यहाँ तक मिलेगा क्या देखो आपके पास बैलेंस है तो भाई आप जा सकते हो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ तक भी आने का चांसेस है which is like 34 32 एरिया और अब ब्लॉक इज हियर इसीलिए तो भाई मैं नहीं जा रहा हूँ ट्रेड पे एक तो भाई मैं यहाँ से बाई करूंगा देख रहा कि भाई यहाँ तक आ जाएगा मार्केट मेरा 50 to 60% डाउनफॉल हो जाएगा प्रॉफिट मेरा चला जाएगा लॉस पे चला जाएगा इसलिए मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ एक तो भाई प्रॉपर जोन के लिए वेट करो प्रॉपर जोन आ नहीं रही है सेलर्स को इन्वर्ट कर रहे हैं बायर्स को इन्वर्ट कर रहे हैं मार्केट जा रहा है उसके डायरेक्शन पे ओके आई थिंक गोल्ड आप जाएगा जाएगा तो सही है बट एसीएल तो भाई देखना पड़ेगा ना मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है ठीक से यूएस सीजन पे ट्रेड करिए ठीक है यूएस सीजन
जीबीपी गया। क्या ही करूँ ब्रदर मैं? व्हाट कैन आई डू? जीबीपी कहाँ गया? जीबीपी कहाँ गया गाइस? भाई मैं इसको क्या नाम दूँ? मैं इसको क्या नाम दूँ बोलो? मैं इसका क्या नाम दूँ? What should I say, bro? What should I say? Like, our analysis is perfect. If I would have taken this trade, then I would have really cried for this. Because our trade was perfect. No reason. Everyone knows that. Everyone wanna take a trade from this order block. So what it did, it grabbed some liquid. I just told you. So if you just take a trade, wait for some okay gap, like 1 hour something, right? Okay. So I was expecting about this area liquidity will grab, but it grab up to this area also. Okay. So due to the news, others why we have got a पहले से 50p। ये बात नहीं हुआ भाई। हमारा तो भाई इसलिए नहीं रखेंगे ना। मान तो रहा हो भाई पहले ऐसे हिट हो गया, बट एनालिसिस सही था भाई। आई नो भाई ये से पहले हिट होगा क्योंकि भाई लिक्विडिटी भाई तुम देखोगे तो भाई पहले इसके नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ पर तुम्हारी लिक्विडिटी है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने पुश किया था ऊपर की तरफ, एंड यू विल फाइंड दैट इज आल्सो लिक्विडिटी लाइक दिस एरिया। सो आई नो दैट इट विल गो डाउन साइड। ओके, इफ आई वर इन अ पोजीशन आई वुड हैव इट विद वेरी लो रिस्क। एंड यू कैन सी कि भाई कैंडल क्लोज नहीं किया। Okay, and you can see that candle hasn't closed below this, so that was the grab. If I were in a position I would just wait for the candle closing,
then only I would have come out from the trade. Okay, nothing to say, brother. It didn't close any candle below. It just grabbed and removed all the buyers. Then it gone straight forward. Nothing else, bro. I really feel bad. And what happened to USD? Okay, not in USD. GBP JPY. Let me check the GBP JPY. What happened to GBP JPY? So that also GBP, right? Okay. This one worked perfectly. This worked perfectly. I in a 4 hours candle, you can see that. Look at this. How much pips is that in a 1 minute? It's a big news, bro. Good. Like a GBP JPY. Within a minute, you got a 960 pips. 960. matlab almost 100. Almost 100 pips in a trade. And continuously, it's going like, "Kahan hai bhai?" It's going carry on, bro. Wow, 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 wow. In a minute of 100 pips. Single trade. And within a minute, ये क्या हो रहा है? What is happening here? यहाँ तक late market need to come up to this area. What do you say, guys? In Euro USD. Am I wrong or right? What do you think in Euro USD? What I थोड़ा busy है. Yes. Yeah, that's crazy, brother. Within a minute, like you got a one lot trade, you got $1,000 in a minute. So that is like someone's like 6 months of salary. Just you blink, wait for 1 minute, you got $1,000 for one lot trade. And think about that if it goes opposite, what would have happened? Like someone's salary would have gone within a minute, like 6 months salary. Okay, so it works sometimes perfectly, sometimes it's not good.
Every currency is going well except this gold. Look at this time frame, 5 minutes, and you see the candle. Okay, 6 months in a minute indeed. Yeah. GBP SL hit. यूरो जीबीपी देखना. यूरो जीबीपी. ये क्या है भाई? ये क्या है? मतलब इसने लिया तो लिया भाई, बायर्स को भी लिया, सेलर्स को भी लिया. हाँ. 1 hour. No comment, brother. No comment. Leave this out of chat. Leave this out of chat. करना क्या चाहते हैं, मार्केट कुछ समझ में नहीं है, हमें मार्केट है. ये यूजुअली होता है, देखो साइडवेज मार्केट यूजुअली मंडे एंड फ्राइडे होता है. आज क्या है भाई, आज क्यों हो रहा है इतना साइडवेज मार्केट, गोल्ड बीटीसी? आज क्यों कर रहा है भाई इतना फेक मूव? ये देखो भाई, एक तो भाई यहाँ पर इतना साइडवेज जा रहा था, सडनली थोड़ी सी स्मेल दिया, स्मेल क्या बोल रहा, सेल दिया, फिर बाय दिया, फिर से थोड़ी सेल दिया, फिर से साइडवेज. डोंट एक्सपेक्ट एनी ट्रेडिंग गोल्ड गाइस. ओके. अगर जीरो ट्रेडिंग बन, जीरो. अरे लग रहा है भाई 500 पे बात करना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. ये कौन से करंट है? करंट है US 100. भाई तुम लोग उस करेंसी पर ट्रेड लेते हो जैसे यूरो एनजेडी? भाई मैं तो ट्रेड करता हूँ सिर्फ गोल्ड एंड बिटकॉइन पे मोस्टली, एंड दूसरे करेंसी पे ज्यादा. मेरे अकाउंट पे देखो तो सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड पे मिलेगा एंड बिटकॉइन पे. कितना पैसे देगा गोल्ड? इसीलिए कितने पैसे देगा? क्या ब्रदर? कितने पैसे देगा? तुम देखो और तुम मेरे को बोलो गोल्ड क्या कर रहा है. गोल्ड क्या करेगा इस. तुम एंड यू गाइस आस्क मी कि भाई गोल्ड पे ट्रेड दो. भाई तुम लो भाई, कुछ लेना. तुमको कुछ समझ में आ रहा है तो भाई तुम लो. हाँ? तुमको कुछ समझ में आ रहा है तो तुम ट्रेड लो. एंड मैं दूंगा तो भाई आप बोलोगे भाई मेरा लॉस हो रहा है, भाई प्रॉफिट हो रहा है. तुम चाहते क्यों हो फिर ट्रेड, जब तुमको देखा आ रहा हो कि भाई मार्केट पूरा साइडवेज पे ये हो वो है. नहीं भाई, हमको तो चाहिए ट्रेड. हाँ वही तो भाई, आज मेरा भी खाया है भाई. मैंने बाय लिया था भाई, यहाँ से बाय लिया था मैंने. ये वाला कैंडल, ये जो व्हाइट कलर कैंडल था ना, आई टू का ट्रेड दिस कैंडल विच इज 335760. मैंने बोला था कि भाई आज सुबह बोला था मार्केट सेल पे गिरेगा. मेरा एक्सपेक्टेशन था कि भाई 200 पिप्स तक गिरेगा, और कितना गिरेगा, लेकिन भाई ये तो गिरा भाई.
72/20 मतलब 500 पिप्स गिरा था। मैंने मार्किंग किया था, ओके मान लो कि भाई मार्केट कितना ही गिरेगा, सो 200 पिप्स इज फाइन इंस्टेंट गिरना। लेकिन भाई इंस्टेंट 500 पिप्स, मैंने बाई को होल्ड किया था भाई। मैक्सिमम आई होल्ड माई ट्रेड आफ्टर 50 to 100 पिप्स, उतना तक होल्ड किया था। देन आफ्टर आई केम आउट, लॉस्ट टेक, बिकॉज आई कैन डू नथिंग ना। इतना पिप्स कौन होल्ड करेगा, एक्स्ट्रा 300 पिप्स। ओके, सो यू आर बैक। Yes, if any setup ready, I will give you trade. I think you can see, and what I see, you also can see the same thing. So before expecting any trade, try to understand the market. You have a mobile, install trading view. If you're watching through laptop, just open your trading view in laptop or PC. Check. If you find out any zone, let me know. Brother, I have found out a trail line, order block, pullback, retrace. Then it will be great. Otherwise, you sit like that, I also sit like that. Yeah, that is a broken English, but it happens. क्या करूँ मैं? You have to be with us, brother. If you go, trade miss हो जाएगा. ऊपर जाएगा को लगता है. मैं सच बता रहा हूँ ब्रदर, आप लेकर देखो पहले. लगता है तुम बोलोगे भाई मैंने क्यों लिया, ऐसे एक्सपेक्ट करोगे. यही तो गलती है भाई. लगता तो भाई बहुत कुछ है, पर जब हम लोग लेंगे ट्रेड तब हम लोग को पता चलेगा. ओके. यही तो बोल रहा भाई, गोल्ड ही है. इट्स अ लाइक नंबर वन इन मैनिपुलेशन. ऐसे मैनिपुलेट करता है. दूसरे करेंसी पर तुम जाओगे तो भाई तुमको वॉल्यूम कम मिलेगा, लेकिन इतना भी मैनिपुलेशन नहीं मिलेगा तुमको. वेन एवर यू ट्राई टू both hours. Okay. Whenever you try to enter in other currency, you will find out the volatility is less. Okay. But अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा. लेकिन गोल्ड पे भाई तुम यहाँ से सेल करोगे, आई मीन बाई करोगे, बाई का प्रॉफिट दिया, आपका टारगेट रहेगा ये वाला हाई तक. मान लो ये वाला हाई 70% जाएगा, उसके बाद चला जाएगा नीचे. मान लो तुम यहाँ से सेल कर रहे हो, आपका टारगेट है ये वाला, ये 70% आया, उसके बाद चला गया. मतलब यहाँ तक आ रहा है, चला जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, चला जा रहा है, मतलब कुछ भी. मंदा खेतर, मंदा. गुड ब्रदर, आप बताओ आप कैसे हो. क्या हो रहा है भाई, इसका हेडफोन क्यों है यहाँ पर. मुझे हाँ. ओके.
तो स्कैल्पिंग करो बड़े लॉट के साथ। भाई मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा थोड़ी बहुत यूट्यूब स्ट्रीम डिले है 30 सेकेंड्स कुछ। आप थोड़ी लेट पे एंटर करोगे, मैं कट कर दूंगा, आप भी कट नहीं करोगे, मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, तो आपका लॉस हो जाएगा, इस पे मेरे को लॉस लगेगा। कर दूंगा भाई, मैं तो भाई शाम को करता हूँ। मैं जब स्ट्रीम को क्लोज कर देती हूँ, मैं 6:30 to 7 o'clock हाफ एन आवर मैं जोन मार्किंग करके स्कैल्पिंग करता हूँ मैं इस समय। ओके, $200 होगा क्या? अकाउंट हैंडलिंग 50-50 भाई, मैं थोड़ी ना है अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ। व्हाइट टाइगर, मैंने अभी बोला तुमको, तुमको मैंने तभी बताया था। देखो व्हाइट टाइगर, मेरे को कोई आइडिया नहीं है $200 पे वो लोग 50-50 करते हैं कि नहीं। एक बार तुमको ही पूछना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो लोग कुछ भी ऑफर देता है, कोई चेंजेस करता है, तो भाई दे नोस। ओके, यू टेलीग्राम पर हमारा चैट सपोर्ट टीम्स का लिंक मिलेगा, और सेंड मैसेज बोलकर मेंशन रहेगा, तुम वहाँ पर क्लिक करो एंड उसको पूछो, इज दर एनी पॉसिबल फॉर $200 अकाउंट मैनेजमेंट, और नहीं तो भाई तुम पूछो $200 का अकाउंट मैनेजमेंट होगा कि नहीं, पूछ कर देखो, एंड दे विल रिप्लाई फॉर यू। ओके, वी हैव दर्श गेमिंग। ओके सर, आपका वीआईपी ग्रुप है क्या? महीने महीने का कितना पैसा लगता है? मेरा तो भाई कोई वीआईपी ग्रुप नहीं है, आई मीन हमारा कंपनी का वीआईपी ग्रुप है। ओके, ये फॉरेक्स प्रीमियम का वीआईपी ग्रुप है, लेकिन वो उसका जो चार्जेस पड़ेगा आई डोंट नो। समटाइम $120 रहता है, समटाइम $100 रहता है, समटाइम $80। $80 तो नहीं रहता, मिनिमम लाइक $100 रहता है लगता है, बट ऑलवेज $120 पर मंथ। क्योंकि तुमको 4 से 5 ट्रेड मिलता है, 3 से 4 ट्रेड तो भाई मिनिमम तुमको मिल जाएगा। एंड आपको कोर्सेस रीड करने के लिए बुक्स मिल जाएगा, आई मीन लाइक वीडियो कोर्सेस मिलेगा, एंड डेली एक एक ग्राफिक्स मिलेगा जिसपे आपको कुछ मार्केट के बारे में तुम सीख पाओ, जैसे एसेंस के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर तुम सीख पाओगे। एंड डेली 4 2 ट्रेड्स, एंड कितना दिन, 22 डेज तुमको मिलेगा, क्योंकि 4 सैटरडे 4 संडे मिल जाएगा ऑफ। ओके, तो ऐसा होता है। आपको इतना पैसा बनाने में कितना टाइम लगा? देखो, मैं ज़्यादा की ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ। मोस्ट प्रॉब्लम मेरे अकाउंट पे तो भाई मैं 100 पिप्स के ऊपर बुक करके बाहर आ जाता हूँ। मेरे को अभी लग रहा है कि भाई अच्छा खासा जोन है, तो भाई मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ। एंड इट डिपेंड करता है भाई मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? लो पोजीशन पे मैं बाय करके रख देती हूँ ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरह, एंड उस ट्रेड को होल्ड करता हूँ। एंड कम से कम तो भाई टाइम तो लगता है भाई, 6 महीने, ओके 1 साल लगता है। मान लो कि भाई दिन में $1000 भी बनाता हूँ, तो भाई 10 दिन में $10,000 आएगा। तो 100 के बनाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? 3 से 4 महीने लगेगा। उसके अंदर मेरे को लॉस भी देखना पड़ता है, तो भाई कम से कम तो भाई 8 महीने एज अ डिसेंट ट्रेडर, ठीक है, एक लॉट पे ट्रेड करके डेली 100 पिप्स का टारगेट रखे $1000 बनाऊंगा, तो भाई तुमको टाइम लगेगा, ठीक है? अरे ये मत सोचो कि भाई तुमको 6 से 8 महीना लगेगा, तो भाई 6 से 8 महीने के बाद मेरे को पैसा आ जाएगा, सो इट डिपेंड करता है भाई, ठीक है? सो यू हैव टू डू कैलकुलेशन। समटाइम्स मैं 0.50 पे भी ट्रेड लेता हूँ, जब मेरे को लगता है कि भाई रिस्क है यहाँ पर ट्रेड लेने पे। आप खुद ही कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है? दिन में मेरे को मान लो $1000 भी बना है, तो भाई मेरे को तो 3 4 साल, तो भाई 3 4 साल नहीं, 3 से 4 महीने मेरे को लग जाएगा सिर्फ प्रॉफिट ट्रेड लेने पे। मान लो मैं दिन में एक ही ट्रेड ले रहा हूँ, वो भी लॉस हो गया, नेक्स्ट डे मेरे को ट्रेड लेना पड़ेगा, उस ट्रेड को रिकवर करना पड़ेगा, रिकवर करके भाई और एक प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो भाई टाइम लगता है भाई, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्रदर, टाइम लगता है बहुत। समटाइम्स मैं क्या करता हूँ कि भाई 1000 पिप्स के नीचे बुक नहीं करता हूँ, ब्रेक इवन रखता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट रखता हूँ भाई। उस दिन मेरे को $20 30 मिलता है, जहाँ पर मेरे को $500 600 मिल रहा था, 20 30 डॉलर मिलता है, तो उस दिन ऐसा हो जाता है।
I buy from 3399. Can I hold 3399? 3399? Vegetable, brother, don't spam. Say one time. I do read everyone comment, so I'll wait tell you. Rahul Gaming. So you just come to learn. ये बढ़िया है ब्रदर. I like that. क्योंकि भाई जो आता है भाई मेरे को बाय ट्रेड दो सेल ट्रेड दो भाई. क्यों भाई तुम सीखने के लिए आओ. सीखने में तुम खुद एनालिसिस करो. और कितने दिन भाई तुम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखोगे. कब खुद से करोगे भाई. आप ट्रेड करो. आपका ट्रेड पे लॉसेस हो रहा है. रीजन क्या है बाय जाने का या सेल जाने का. इसी तरह पूछो. मान लो मैं वो कोई बाय लिया उसका रीजन पूछो. भाई मान लो मैं बाय पे जाना चाहता हूँ. उसका बोलो मैं ये देखा मेरा ये स्ट्रैटेजी है एंड इस पे मेरे को जाना सही रहेगा कि नहीं. तो तब भाई तुम भी सीख पाओगे. आपका स्ट्रैटेजी मैं भी सीख पाऊंगा. इसी तरह होता है भाई. यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे लोग हैं कि भाई मेरे को बाय ट्रेड दो सेल ट्रेड दो. यू नो गाइस कि भाई अगेंस्ट द रूल्स हम लोग से भी गाइडलाइंस भी फॉलो करना पड़ता है कि भाई एंड आरबीआई का रूल्स भी है. यू कांट शेयर गो फॉर द बाय गो फॉर द सेल. हम लोग खुद ही भाई एनालिस करके देते हैं कि भाई यहाँ से बाई के चांसेस है क्योंकि भाई प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है या एसएमसी फॉलो हो रहा है. इसी तरह ट्राई टू लर्न. ओके. इतना टाइम तक बैठे रहता है भाई कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है. सिर्फ पूछता है भाई बाय और सेल. नॉट गुड. ओके फिस्टेबल यू टू का बाय. व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग एम ना बाय. टेल मी. एंड इफ यू आस्क me should I hold or what, first of all try to understand you took the trade. Okay. Okay. So Fistable, if you taken any trade, I think you have analyzed your trading strategy and you took the trade. And if you see now market is in 3343, that means down 500 pips. भाई 3399 वो किधर है भाई. किधर है वो. किधर मतलब दिस एरिया. कौन से लॉजिक पे भाई अभी भी होल्ड कर रहे हो ट्रेड को पता नहीं भाई. मैं खुद ही लिया था ट्रेड. मैंने खुद ही 100 पिप्स के बाद मैंने बाहर आ गया खुद. मैंने बाय लिया था ये वाला. मेरे को लगा था कि भाई यहाँ से पुल बैक करके ऊपर की तरफ जाएगा. वाई दैट इज दी 1 डे एंड 4 आवर्स का रेजिस्टेंट था ये वाला. ओके. सो दिस इज दी 1 डे एंड 4 आवर्स का रेजिस्टेंट. तो मैंने उसको फॉलो करके पुल बैक पे मैंने बाय लिया था. एंड मैंने ये पार्सनल लिया था क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रेड जो आपका लॉस हो जाए. अब वेट करो. लॉस भी ना होना चाहिए इसीलिए मैं ट्रेड नहीं दिया था तुम लोग को. मैंने सिर्फ बोला था कि भाई तुम ट्रेड करो सेल करो या बाय करो. बट मैंने खुद नहीं लिया था क्योंकि मैं जो बोलता हूँ भाई कोई सुनता नहीं है. मैं जब ट्रेड लेता हूँ भाई तभी वो लोग लेता है. 3399 पर 94 पे सपोर्ट था. ये कौन सी है. ये है 76. ये था 95. कौन सी सपोर्ट ब्रदर. सपोर्ट तो तुमको भाई 96 पे मिलेगा. मान लो at 94. So you can see the support is here 97. ये है 86. ये था 95. 94 पे सपोर्ट. पता नहीं भाई. फिर भी आपने बाय लिया तो भाई इतना टाइम तक क्यों होल्ड कर रहे हो ये बताओ. पैसा बहुत है क्या भाई. 500 पॉइंट तक तुम होल्ड कर रहे हो. 500 पॉइंट नहीं 5000 पॉइंट कुछ होगा. मैं तो 500 पिप्स तो भाई ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं. भाई मैं तो भाई मेरे को तो भाई नींद ही नहीं आएगा इतना तक होल्ड करने के पास. एक लिमिट होता है ब्रदर. 100 पिप्स तक मैक्सिमम होल्ड करो. नहीं तो भाई 150 to 200 पिप्स तक होल्ड करो. ठीक है. जब आपके पास लो ट्रेड लिया हो लो रिस्क पे तो भाई 100 to 200 पिप्स इज मैक्सिमम. तुम्हें तो भाई 500 पिप्स तक होल्ड करो. एंड तुमको लगता है कि भाई आज ही आएगा. एंड मैं थोड़ी ना ब्रदर गॉड हूँ कि भाई तुमको बता दूंगा कि भाई हाँ जाएगा तो भाई तुम खुश हो रहोगे. मैं तो भाई इतना भी गॉड नहीं हूँ. मैं गॉड रहता तो भाई मैं थोड़ी ना यहाँ पर बैठा रहता है. मैं खुद ही ट्रेड लेकर खुद ही प्रॉफिट करके भागा जाता. ठीक है. ये यहाँ पर बाई जा रहा है यहाँ पर सेल जा रहा है. करना क्या चाहता है भाई कुछ समझ नहीं आ रहा. देखो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इफ
50 break, you are lucky, brother. Okay, 3350 break, then you are lucky. Okay, because this is the high. If it break this, then you are lucky too, and you'll get a 70 minimum 70 to 80. Okay, okay, $2640. So that means you like losing only $50 to $60 something. That's it. Okay, so that's fine then. Then you can hold, brother. Then hold. फिर भी brother try to understand भाई 50 pips भी. ओके सर, बाय में लॉट साइज कम है तो होल्ड कर सकते हैं, सेल में करोगे तो लॉसेस होंगे. हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टॉक की वैल्यू बढ़ता है, घटता कम है. ओके, यू कैन होल्ड ब्रदर, यू कैन होल्ड. और आपका होल्डिंग रहना पड़ेगा, जो लो था वो लो तक तुम होल्ड कर सकते हो. वो ऊपर जाएगा लेकिन टाइम लगेगा बहुत. ये 50 ब्रेक करना पड़ेगा, 50 के बाद यहाँ पर टाइम पास करेगा 60 पर. 60 ब्रेक करना पड़ेगा, 60 ब्रेक करने के बाद तुम्हारा 70 पर टाइम पास करेगा. 70 ब्रेक करना पड़ेगा, 70 ब्रेक करने के बाद तुम्हारा 80 पर ये वाला 15 मिनट का ऑर्डर वर्क बन रहा है यहाँ पर. यहाँ पर तुमको टाइम पास करेगा. तुमको भाई 1-2 दिन तो लगेगा. 1-2 दिन मतलब रात पे हो सकता है. कैन कम टू योर जोन. ओके, अब ट्रेड जोन पर ट्रेड लगाइए. Okay, I thought it is the zone, act as a support, and it will go all time again. Yeah, but try to understand. We know that every stock, the much it goes down, and it recover within us 60 to 80% in the next okay, next few days. But we have to hold that much. So some person don't have that much balance to hold on, like that much fall. Cause you're lucky you have taken a trade with low risk. But fine, yeah, it will go upside. Okay, gold will go upside. But hold karo, and don't hold for that much long time. Don't hold for long time. Just you can come out like this area, which is 3310 maximum. Maximum, if you hold your trade, you can hold up to $100. Don't hold for more than that. Okay, सर आप स्क्रीन पर ट्रेड लोगे. ट्रेड बने तो भाई लेंगे, नहीं तो भाई मेरे को नहीं लगता कि आज ट्रेड लेना सही रहेगा. इतना फेक मूव कर रहा है. आपको क्या लगता है आज ट्रेड लेना सही रहेगा? यूएस सीजन पे देखेंगे ब्रदर, यूएस सीजन पे. ओके, यूएस सीजन पे एक मार्केट चलता है तो भाई हम लोग कंटिन्यूस ट्रेड पे ले लेंगे ट्रेड. क्या बात है? लगता है कि भाई पूरा दिन ऐसे ही चलेगा मार्केट तो भाई हम थोड़ी ना ले सकते हैं इस पे ट्रेड. राइट, तब तो भाई हम लोग को लीव करना पड़ेगा. ऐसे क्या मार्केट है भाई, क्या करना चाहते हैं? ये देखो यहाँ तक आया, उसके बाद सेल पे जा रहा है. मतलब मेरा भी मानना है कि भाई ये बाय की तरफ जाना चाहिए. क्या बोलते हैं इस? Yeah, it happens in a night time mainly. Yeah, it will go upside for sure. डिले है क्या? You have to wait, brother. Wait for the 3350 to break. Okay, this is the 3350. Why I'm telling you, you can see some like support की तरफ तो नहीं है ये, बोल नहीं सकता support, but we have to wait. I'll wait for the trade. Otherwise, I will take it. Okay, wait, do wait. Okay. Otherwise, nothing is confirmed here. Right? You can't get any confirmation in this area.
गोल्ड बुलिश है बियरिश है, देख सकते हो, आप बताओ। Looking for good bullish ride in 4 hours time frame. Yeah. Hi, ताहिर, अब बताओ गोल्ड बुलिश है या बियरिश है? पहले तुम खुद समझो, मैं बोलूंगा तो वो तुमको समझ में आ जाएगा ब्रदर, ये बताओ। मैं कुछ भी बोलूंगा तुमको समझ में आएगा? आपको क्या लगता है, पहले ये समझो, आपको क्या देख सकते हैं इस पे, क्या लगता है गोल्ड बुलिश है या बियरिश है? So those are watching, like, what do you think right now? Gold is bullish or bearish? Gold bullish है bearish है? And if I go to the 4 hours also, let's see, फिर से 1 डे 4 आवर्स को ट्राई करेंगे, देखते हैं 1 डे पर। हाँ, ये क्या है, 1 डे पर तो भाई इसको ब्रेक कर दिया। आज इसके नीचे रहे तो भाई कल मतलब यहाँ तक आएगा, 3352, 1 डे टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट 3324 क्लोज कर दिया तो। Please to wait, okay? Please to wait. Let's see what can happen. Right now, I can see sideways market. Give me a minute.
ओके। ओके भाई, क्या मैं यूएसडीटी को अपने एक्सएनएस के क्रिप्टो वॉलेट में से अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, और प्रॉफिट को मैं बैंक अकाउंट पे विड्रॉ कर सकता हूँ, वो भी एक्सएनएस में, बिना कोई पी2पी के? नारायण रेड्डी, देखो ब्रदर, इतना आई डोंट हैव आइडिया, ठीक है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है इस पे, क्योंकि मैं उतना करता नहीं हूँ पी2पी पे एंड जैसे यूएसडीटी पर। बट जितना मेरे को लग रहा है कि हाँ, तुम यूएसडीटी से तुम एक्सएनएस पे डिपॉजिट कर सकते हो वॉलेट पे, क्रिप्टो वॉलेट पे, जितना मेरे को आइडिया है, लेकिन मैंने किया नहीं अभी तक। सो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, एवरीथिंग इज लाइक ट्राई। सो आई हैव नो आइडिया ब्रदर। नारायण रेड्डी। ओके, 3350 से सेलिंग आएगी कंफर्म, रिपोर्ट है। नाम क्या है ब्रदर आपका, ये बताओ पहले। ट्रेंड, ट्रेंड, लेट्स सी ट्रेंड। ओके, so just leave the gold. Let's check the Euro USD. Right? I told you the Euro USD. Okay, I told you, na, almost, almost get to the exact area.
Okay, yeah. So we can see that market is going in a buy side. Okay. होते होते इसलिए ट्रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है এটা করছিস এটা দিচ্ছে দেখো পুরো অর্ডারটা কত ঘন্টা আছে अब ब्लॉक है तो यहाँ तक है जो जाएगा 60 तक तो जाना चाहिए मार्केट को 50 to 60 मतलब 90 to 100 पिप्स जाना चाहिए एंड इसे तो मैं रखूँगा 47 पर उधर भी इसे এখানে মতো না আসবে তো আমরা উপর দিকে উঠে শুনিয়ে नीचे একটা নিয়েছি यहाँ से यहाँ तक চলো ভাই ধাপ ধাপ করে ওটা পড়বে তিনটা ফ্যাক্টর হয়েছে যখন বলতে আসবে তারপরে মারা কত বলছি দেখি কত লটে নিয়ে 50 0 पॉइंट तो मैक्सिमम कितना ही जा सकते हैं यहाँ से 64 तक जाएगा उसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए 46 okay so hi any entry in gold should I hold because 50 is break right yeah you can hold brother you can hold I just entered with a very low risk on a buy side okay I took a buy right now and I'm just holding my trade up to this area I will hold my trade up to 44 and I have taken a buy trade okay so if you don't know I have taken trade try to you can enter and you can keep your SL up to TP up to 60 and SL up to 44 up to this red candle because I can see some pullback also if it does it will do up to 46 so I have extended my SL up to 44 and I have taken a trade so I take this trade from this change of character and if anyone want to enter please do research by yourself and enter I don't want to say if I enter in a trade. If you think so, then enter in a trade. Otherwise, just leave it and come out from the market. কত নিচে দেখ ভাই 78 16 16 32 ভাই এক লট एक बार का ट्रेड करा है এবার এই ঠিক করে আমার হয়েছে ভাই সাত পুরো तो फिर बेचते हाय ब्रदर हाय ব্রেক কর तो ये अच्छा ব্রেক কর ब्रेक कर देगा वो कर देगा ओके जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाने के चांस नहीं है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो चुका है अभी यहाँ पर कुछ भी जोन नहीं है लेकिन इसको फॉलो करके मेरे को लग रहा है कि भाई ये पूरा जाएगा फिल करने के लिए ये जो फैन वाली गैप है
इस फैल वाले गैप को फिल करने कम से कम 58 तक तो भाई आना चाहिए मार्केट को. Let's see. I'll try to hold this trade up to 58. My SL is here, okay. তো এসএল কত রয়েছে? কত অবধি হোল্ড করবে? 30 কোথায় ওটা? I have a layer. Okay, so that's great. 45. 45. Okay. If anyone enter, try to do regarding your trade, okay? Goals and now. Let's see, brother. I just took the trade regarding the change of character. Okay, SL 3355. Okay. Mine simple concept, brother. I saw this breakout, so I took this trade. I'll come out from this area also, like previous candle low. Why? Why you don't like? It will go upside. It will go up to this. For sure. 361. For sure it will be goes 361. Hi, Manu Kalpa. Okay. 3351 to 3361 is almost 100 pips. It will be goes on. স্ক্যালপিং করে যাচ্ছে জানে হ্যাঁ ঠিক আছে লসেস কমই করে ট্রেন্ডে তাতে তোরই সেফ রিট্রেস করলে তাহলে কিন্তু শুট করে থাকবে তুই তো তাও অলরেডি তুই প্রফিটে আছিস তোর 400 তো আছে নাকি তোর ওই 150 100 করে করে বেরিয়েছিস না তুই ভাই টুইটারে ক্লোজই করবো না ভাই ছেড়ে দেবো 61 যাবে একদম চ্যালেঞ্জ ব্রো। ওকে ट्रेडिंग मार्क्स ये रिचार्ज अभी से देखोगे तो भाई 25 पिप्स ऑलरेडी चल रहा है 28 पिप्स ओके 29 3 तो ओके 30 पिप्स ओके you can see this it's already running in the 30 pips look at it 35 pips 37 so if you calculate this 61 जाएगा ही जाएगा कुछ भी कर ले भाई 61 जाएगा ही जाएगा उसके बाद फिर से रिट्रेस मारेगा थोड़ा कट करके वापस आओ वहां से फिर से लो फिर से ऊपर नो मैटर व्हाट I don't know brother but from my side I'm in a buy and I took I am pretty much sure see the okay do research by yourself anyone okay सर क्या आपके स्क्रीन पर ट्रेड नहीं लगा मैंने स्क्रीन पर नहीं लिया पर्सनल पे लिया वो भी बोर्ड ने सेव लिया से बोर्ड ने सेव लिया से वो तो 200 पे अंडर भी होल्ड कर रहा है ओके ओके सो अभी भी देख सकते हो भाई सेल जो भी लिया था आई मीन बाई जो भी लिया था हाँ ट्रेडिंग ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे को मिला है ट्रेडिंग কাটছে ফিরে গেছে सब फिर से इसे देख रहे हैं 100% 61 जाएगा ही जाएगा ओके
ओके, यहाँ से जाना चाहिए मार्केट को। लेट्स सी। ओके, न्यू अपडेट बुलिश है बेयरिश। सो मार्केट में जो जोन है बुलिश की तरफ तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए कैसे? আবার নিয়েছি, हम्म। उस पे जा रहा हूँ मैं। फिर से आ गए ब्रेक इवन पे। ओके, I took trade, but again it hit my break even. So again, I'm gonna try to take a buy with a low risk. Okay. So from where 50 to 54. Okay. So again, I'll try to hit again 54 to 55. Let's see, otherwise I'll come out. क्या करना पड़ेगा मेरे को? Give me a minute, guys. US oil. Give me a minute, I'll check that. US oil. US oil is on a buy, brother. It's going on a smooth buy. How much minute away? It's in a bullish market. Give me a minute. Okay. एक आवर वीडियो ना, एक ट्रेड हार्ड इसको एक बार ब्रेक करते हुए 61 तक चला जाएगा। और देखा ट्रेड नंबर 50 से। अरे यार जा तो रही है अच्छे से, मतलब जा रही है फिर से आ रही है। मार्केट क्या कर रहा है भाई? 25 पिप्स फिर से जा रहा है। ओके, इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। Now no one is asking should I take a buy or sell. Whenever I don't have take any trade, like if I don't take any trade, that time only I get a question, should I go for buy or sell? Now you go for the buy, brother. Okay, news negative or positive for gold. The news doesn't matter, brother. Okay, Oh, it's gone well, and I'll just put a trailing SL buy. मत रख तू, ट्रेनिंग से मत रख, I- मत रख, ऊपर जाएगा 61 फॉर श्योर। तब फिर से नीचे आएगा, फिर से लूंगा और क्या। ट्रेलिंग मतलब यहाँ पर रखूंगा ब्रेक इवन पे। भाई तेरा मर्जी। चल तो रही है भाई। ओके,
न्यूज़ कुछ नहीं था भाई, which I told you it again hit the zone. सो एक बार इसको ब्रेक करना दो, 55 को ब्रेक करना दो गाइस। 56.1 तक चला गया था। 55 एक बार ब्रेक हो जाए तो भाई मार्केट चला जाए 61। 55 पर मार्केट ने थोड़ी बहुत कॉन्स्टेंटली वहाँ पर एक मोमेंटम कर रहा है। ओके, एंड आई डिड अ ट्रेलिंग एसएल, यू कैन सी दिस ट्रेड कितना पिप चल रहा है भाई, वो भी कैलकुलेट करके भी देख लो, बाद में मत बोला कि भाई मैंने ट्रेड नहीं दिया। ठीक है, ये देखो 60 पिप्स ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो एंड करेंटली राइट नाउ देखोगे तो भाई 49 टू इट्स गोइंग ऑन 55, मतलब 50 पिप्स तो भाई तुमको इजीली मिल गया। सो एंड आई एम जस्ट ओके 100 ग्रेट पिप जाएगा 61, कर लो कोई भी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, एक ही ट्रेड में भाई बहुत अच्छा खासा लो रिस्क नहीं जिगिस ना, वो अच्छा तो उठा आ गया ना होना आई बोली। ओके सर 61 जाएगा गोल्ड, देखो ट्रेलिंग करना 100%। इम्पोर्टेंट है। एंड ये देखो कोई भी वाह, कुछ भी बोल दे 61 जाके ही रहेगा। मैं तो भाई अभी के लिए ट्रेलिंग करके रखा हूँ, ट्रेलिंग मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट रख चुका हूँ, क्योंकि ये इट्स नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी, आप देख सकते हो। ठीक है, 80 पिप्स, इसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि भाई ट्रेड नहीं मिल रहा है तो भाई 100 पिप्स जाएगा 100 पिप्स। ओके 100 पिप्स से नीचे बोलता नहीं है। भाई बहुत बढ़िया गया है भाई मार्केट। जितना भी हुआ था सब क्लियर आउट हो चुका है। तो एक्चुअली हट ते करो व्यू करो। चीनी ना दोगे। okay, should I hold under 3399? You already have taken a second layer, right? So you can hold. If you came already profit, you can hold, brother. Okay, I'm just holding my trade up to that, and I did a trailing. Okay, I just told you guys मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ ट्रेड को, एंड ये कितना पिप्स चला गया ये भी देख लो। ठीक है, 90 पिप्स डन। 100 pips should have to be done। ऑलरेडी जस्ट मेंशन देम। 3361 जाएगा। 3361 मैंने कम बोला भाई, उसके भी ऊपर जाएगा। 3361 के बाद तू आराम से, मैं 100 पिप्स के लिए बोला ये जाएगा पूरा यहाँ तक, मैं कर ले यहाँ तक एकदम 71 200 पिप्स। I'll tell you later, brother. कुछ नहीं है भाई, छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, वो ऊपर की तरफ जाने के लिए है। टेंशन ले लेने का।
फर्स्ट से आएगा तो भाई 55 तक आएगा। सब रिकॉर्ड होगा। ছিল তখন, তখন রিকভার হয়ে তখন চলে গেছিল। यहाँ से फिर से जाना चाहिए ऊपर मार्केट को, ये नहीं जाता तो फिर से आ जाएगा ना मार्केट 3349 पर। ठीक हो गया। हिट कर दीजिए। अरे यार, मेरे এখানে তো আসতে তো মার্কেটে 3350 फिर से 3350 फिर से ट्राई करूंगा मैं लेने के लिए। Do the training. I just told you. Do the training. I'm just doing the training only. Okay. Should I hold until 3399? Again, it's gone downside. If it gone again, I will try to enter again. So 51 to 49, which is again same area. Ready for enter now. टच हो गया फिर से, and I will try to enter again with a low risk. Okay. Okay. I'll tell you later, brother. Wait. Actually, I have taken a gold trade. So if you want to take a trade in a gold, you can enter. Okay. Do trading. I would say if you enter in a trade, enter करो low risk पे.
ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेट्स गो। हाँ, आवर वही जगह से वही सेम जोन ले लिया, फिर से आ गया, फिर से ट्रेडिंग हुआ, उसके नीचे जाए। Easy peasy trade, easy easy, you can enter in a trade, make some profit in it. Okay, a fast movement is going on. You need to go buy side. Okay, can we enter in gold? Actually, I taken brother, and I have mentioned you. Whenever you try to enter, yes, and I will come out in a cost to cost, because you can see that if the market is going okay down and it's going fast, upside also. You can come out below this candle if you enter in a trade 47. Okay, and I'm doing the same things. ओके, फिर से गया, फिर से गया, फिर से एंटर करेंगे, फिर से जाएंगे। इस टाइम थोड़ी बहुत डरावनी लग रहा है, एंटर करना सही रहेगा कि नहीं, चेक। ओके, डाउन मूव है अभी भी। ओके, चलो मूवमेंट हुई है इस पर। Okay, you can do the scalping in this area. Whenever market goes up, do the trailing. If it hit, wait for again in the same zone. Then should I add another level at 50? Yeah, you can do that, brother. You can do that. Why not? Okay, गलत जगह। Now it will fall up to 46. If it fall up to 46, hmm, 46 तक आने का भी चांसेस है यहाँ पर। नहीं, 46 पर एक ट्रेंड है वहाँ पर। I'm just looking at that and I'm just entering. Okay, जाना तो चाहिए, ये वाला जोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला हाई, ये वाला पुल बैक। ठीक है, तो ये वाला जो हाई है, यहाँ से मार्केट को पुल बैक करके ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए फिर से। इट्स डूइंग द सेम, लेट्स सी। फिर भी मत भाई, ओहो, कोई ना, मेरा एंट्री यहाँ पर है। Okay, so everyone is making profit, I hope. Do enter, keep your ASL regarding your equity। जब 20 to 30 पिप्स जा रहा है, ट्रेडिंग करो। मान लो वो हिट हो गया, फिर से मार्केट नीचे आएगा,
मान लो हिट हो रहा है मतलब नीचे आएगा, राइट? Then after you can enter again. So I'm doing the same things. Whenever I'm entering in a trade, so if it goes more than 20 pips, I just drag the SL into the cost to cost or above this. And whenever hit, make some profit, again I do enter. Sam, what's up, Brady? How's going? Yeah, doing very well, brother. How about you? How you doing? How you doing, brother? Oh yeah, everything going on perfect, bro. Everything is going on perfect. I have taken a buy trade. Each time market comes here, I have taken a three trade in between this area. One I took from this area, gone to 90 pips. I did the trailing SL. Second, you can see the second candle which is came here. Again, it did 20 to 30 pips. Hey, Dojara. Yeah, it's same happens to me also. I took trade and I made also losses. Then again, I did the recovery. I did take a three trade in this area. One is from this red color candle, I mean this blue color candle. Second time, if you see, it came again to this area. So I took again and I made a scalp in that. Then again, I took a trade from this area. Market came up to here. I know that it will retrace from this area, and you can see from that. And currently, it's running at 30 to 40 pips. Okay. So that way I took, makes, come out, trail, I enter, come out. Okay. Cause we know that suddenly market making 1,000 pips, like almost 1,000 pips dump. Yeah. Like 1,000 pips of dumps, this one, if you see. And that way I enter, take profit, put a trailing as a cost to cost. If it hit, again I wait for market to go down, then again I enter. So that way I took. Thank you, brother, Faras Shindi. Okay. Thank you, brother Shindi. Though, should I tell you how fast my heart was beating 2 minutes ago? Why, dude? What happened? What happened, dude? And continuously is going in a very good way. Okay, I just low risk, Hogi. Every time I take, I'm taking with a low risk. Should I should have entered in a high risk. Should I hold করবো? 161 যাবে আমি বলে দিই আর তুই সেটা কিভাবে ইউটিলাইজ করবি সেটা তোর ব্যাপার I just again here, again hit, again enter. 61 যাবে এটা তুই কিভাবে ইউজ করবি সেটা তোর ব্যাপার I need to check this trading view. Yeah, yeah. So this is the zone which is 55. If this 55 break cause in a 5 minute, okay, it's a 5 minute. And if you see in a 5 minute, this is the main zone which I have been checking, low area. So low area is here. So market is obeying this area. If you see this, so market comes to that area, do some grab and goes downside. तो इस पोजीशन पे जब आता है मार्केट, मैं ऑलवेज पुट अ cost to cost 10 to 20 pips. I put the trailing and I'm making a money in it. So I just want to break this area. If it break, you will get a huge pump upside and our target will be done. Okay. The pullback was brutal. So should
Yeah, even I also got scared because I have entered from this area again. Then again I saw that it's going down, and same thing happened to me also. But I know that. So that was the 5 minute. If you see, here is also 47 to 46. That is also a pullback area. So I just believe, okay, if it goes that below this, I will come out, and that is the reason I put a safe asset, little bit of big. I just enter, make profit, come out. Enter, make profit, come out. Do that. Anyone is making profit or what? And don't say that nothing is. I mean, like you're making nothing. Don't say that. খোলা করে দিয়ে বসে তো ফুল হয়ে গেছে আর সবাই বসলো what happened to our trading view okay it's trying to break 14 seconds 13 if it break this candle above that line okay so that we will get a good profit margin I think yeah break this high okay it break let's go to the wait what is this okay yeah should be like that in making us scared हाँ, डरता क्यों है? candle closing is very important no? डरने की कोई चीज नहीं है, सिग्नल को तक जाएगा भाई, तू लिख के ले ले। okay एक बार आपने बोल दिया सिग्नल जाएगा तो वो जाएगा। 65 से नीचे आएगा भाई ये तो नहीं बोल सकता उससे नीचे आएगा कि नहीं हाउ कैन आई से दैट 61 तक जाएगा, उसके बाद 71 तक जा सकता है, वो मैं बोल दे रहा हूँ। like great it's going very well break above this okay 40 to 45 pips today are great deals it's not only 40 to 45 pips yeah that is true but from 49 to 57 which is obviously 80 pips from 49 to 57 so before closing our stream we did it bro we did it so the day hasn't waste wow I drag just drag just watching the trading view also and my trading SL is in 53 now 53 yeah never forget the target if it comes doesn't matter if it don't come also doesn't matter because first time given you 90 pips second time we are giving you 80 pips कि look at this dude look at this dude. why that is called my I- okay 59 61 है वीडियो। system video मैं
Not only 90 pips. Now I have to write down. I don't know how much pips is that. Okay, for your good, it's 100 pips. It cross 100 pips. अरे ब्रो, एक बार बोल दिया 61 मतलब 61 मैंने बोल दिया था, कोई कुछ बोल दे। Look, bhai. Patience is the key which taken us by drag and make it trail. Just trail. ভাই বিশ্বাস কর জীবন মরণের খেলা খেলছি, তুই এই সময় আমাকে কেন এরকম 61 only go. By selling, can I buy now? Yes bro, you are very fast. 20 pips बाकी है, ले लो। Well, nothing, no comment. ओके सेलिंग नहीं आ गया क्या भाई? जब बाइंग पे चल रहा है तो भाई हमको सेलिंग क्यों चाहिए? मैं बाइंग पे प्रॉफिट कर रहा हूँ, देन व्हाई आई हैव टू सी द सेलिंग? ऑलमोस्ट डन। और क्या एक्सपेक्ट करो भाई? मोर देन 100 pips. Calculate this. Back to back TPs. Yeah. Each day TP, each day. कर दिया। करिए, मेरा देखने तो भाई। मेरा अभी नहीं, नॉट येट, नॉट येट। कट नहीं, ट्रेलिंग। भाई मैंने भी कट करके बाहर आ जाता। Not yet. I don't want to cut this trade now. Just freeze. नहीं, no. Okay, मेरा done for the day. Okay, yeah, done for the day. I did the trading. Hit. मैं तो जाऊंगा भाई। या भाई मेरे को, मेरा हीट हो गया, मैं बाहर आ गया। मैं तो जाऊंगा भाई, कुछ नहीं कर सकते, 61 जाना ही है मेरे को। फिर से ले 5 6 7 71 खेल रहा हूँ। कर ले भाई, कर ले, इट्स फाइन। ओके 64 पे तो वो भी है भाई। देखो ब्रदर, मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, एक ही ट्रेड पे प्रॉफिट करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। एंड आपके लिए जो 64 बोल रहे हो तुम, 64 जो भी कहाँ पर है भाई? 64 पे यहाँ पर कहाँ पर वो भी है? इस वो भी कौन सी टाइम फ्रेम पे बोल रहे हो? 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट? कौन सी वो भी भाई? ये वाला, दिस इज नॉट अ वो भी ब्रदर। ओके, दिस इज नॉट दी वो भी। इफ यू आस्क मी, ठीक है। जोन अभी भी पेंडिंग है, जाएगा भाई 61 तक तो भाई जाएगा, ठीक है। जोन अभी भी पेंडिंग है। दैट्स लव in Islam, everyone make profit. Now I don't know where is other guy who was expected to take a trade, given you done 100 pips. What the fuck? Yeah, is there any possibilities to get a 65 level? 65 level, yeah, that is the possibilities. Every time you will get a pullback from here also, I think. Yeah, I believe like you will get a pullback from this area, like this candle. It did a pullback, right? So it can do from 56 again. Okay, 37 पर वो भी है, 37 पर, 37 कहाँ पर है भाई? 37, 49, 42, 32, यहाँ पर 32,
Okay. Yeah. री एंट्री होगा क्या? कैसे भाई ब्रदर, अच्छा तो हूँ मैं, री एंट्री कैसे होगा ब्रदर? आप देखो ऑलरेडी जोन हो चुका है कंप्लीट, इस पोजीशन पे तो री एंट्री कैसे करोगे? ओके 60 टच। ओके, और कुछ? ओके इचिगो, आई होप यू मेड प्रॉफिट. देन EST, did you guys take a trade? I don't know. Okay, it's more than 100 pips. More than 100 pips. Okay, so that's it for today, guys. We will close our stream now. And thank you for watching. Thank you for staying with us. देखो सुबह से शाम तक मार्केट को ट्रेड नहीं मिला, बट एटलीस्ट क्लोज करने से पहले हम लोग को 100 पिप्स मिला. 100 पिप्स पे हम लोग ट्रेड लिए थे, 100 पिप्स को हमको प्रॉफिट मिल गया. एंड ही ऑल्सो केम आउट फ्रॉम द मार्केट एंड आई ऑल्सो केम आउट फ्रॉम द मार्केट. सो ऐसा नहीं कि भाई हमको टारगेट तक हिट करना है, ट्रेडिंग पे हिट हो गया मेरा. सो फाइन, आई जस्ट केम आउट. आई केम आउट इन दिस एरिया, ये वाला हाइट, ये जो वाला जो स्पाइक में आ रहा ना नीचे, तभी मैंने बाहर आ गया. एंड उसने अभी उसका टारगेट जो एग्जैक्ट प्रॉफिट था उसका, वो हिट कर लिया, तो वो मैं बाहर आ गया. ठीक है, तो बस. ओके, सॉरी गाइस, हैप्पी. ओके बाय ब्रदर. या अच्छा खासा हम लोग बाय द एंड ऑफ द डे वी क्लोज्ड विद अ प्रॉफिट. ओके, सी यू गाइस. कल फिर मिलते हैं. यस ब्रदर, कल मिलेंगे. कल देखते हैं भाई, फ्राइडे बहुत ही मार्केट ऐसे ही हो जाएगा. मार्केट भाई, आई टोल्ड यू भाई, वेट करो मार्केट पे. टाइम लगता है भाई मार्केट पे तुम लोग को. ये देखो, हाँ, टारगेट डन. तो भाई और क्या ही दो ट्रेड. ये बोला था भाई यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने दो, यहाँ पर CHOC हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, इसलिए मैंने एंटर किया था ट्रेड पे. जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ही शिफ्ट नहीं होता है भाई, तब तक हम कैसे एंटर करें, राइट? कल अच्छा प्रॉफिट कर देना, वीकेंड पे मजा करेंगे. ओके गाइस, यू कैन सी टारगेट हिट 61 डन. ओके, ये था ट्रेड जो खुशी खुशी पे चल रहा है भाई. मेरे को तो लग रहा है भाई आज प्रॉफिट करने के बाद मेरे को ट्रेड ही करना नहीं है कल. मैं क्यों ट्रेड कल करके लॉस करूं मैं? पता नहीं, फेक मूव बहुत होता है फ्राइडे, क्योंकि भाई दे नो दैट सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है. ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन ही इन्वेस्ट करते हैं लोग, एंड वो भी गोल्ड पे, क्योंकि भाई मार्केट पे एक गैप अप होगा. ओके, so let's go. See you guys. Thank you for watching. And yeah, love you guys.